Good morning, everyone. I had a good night's sleep and interesting market today. I hope there is an improvement in the quality of the transmission. We're finding a difference in the quality and the execution. Please give me a yes on this. We're transmitting data. Good morning. There it is. Very first trades of the morning. HDFC. I have just begun with improving the quality before in a week. There will be a lot more which we will improve on. Yesterday we were talking about said the maximum correction. Forget the spike in the morning. So I am looking at 18,800 to be tested before this market starts picking up again. Those who have been here yesterday and day before, you know where this length of these lines are coming. Continue to use them as long as this rally continues. What holds today? I don't remember which one. I had given most probably. See how. See what we do. Below this, then वॉइस बंद हो जा रहा है इन बिटवीन. वॉइस बंद हो रहा है कि म्यूजिक बंद हो रहा है? Big question. If you move away from the mic, please. Of course, when I move away from the mic, the background music will play. But I'm not really saying anything. When I move away from the mic, whenever I'm talking anything important, I'm coming towards the mic. There's a whole lot of other noise which will become there. Today we were looking. So
Uh, Thermolo. We will be on something else. He has come. Will go beyond this level. See what it is. Early. Watch for a while. Everything is fine. Voice is clear with clear background music. Yes, there was a lot of effort which was done last night. Nothing is a problem. Whenever I speak, the music will automatically go down. Background music automatically goes down to 0. When I can also see that it is perfectly set. There is not much problem. Practically, there is no problem. Even the streaming today is being done in 4K. We were doing, for the last 2 days, we were streaming in standard definition. It is in 4K, so a huge difference there. See, market's going to do what it is. Super, thank you guys, thank you so much. I'm trying to improve this more and more and more. See, back to Nifty. Like I said, if you remember tomorrow, like I said, take this yellow line and toggle it on the high of the day. Just drop it on the high of the day, and tomorrow morning we should see a dip which should come till the bottom of the yellow line, and then we should see probably once, because the morning dip was high was much lower, we need better wait for a while. Put it on this, then on this. Two things we need to just watch. If it goes above this, then market's heading all the way up till here. Let's see what it does. There is no hurry to trade in the very first dip of the morning. Watch, then we can take a trade later. Really, for the uptrend to continue, it should not dip below this point. It put yesterday. Oh, I just woke up at 9 o'clock today. So please excuse my appearance. How it is, I wake up almost at 5 minutes past 9 every day, then come. So, then I look at the computer, then I trade if I feel like. If not, I'll just be watching, doing some other things. Now that some other thing has got replaced by live trading and talking to all of you, I'm enjoying it very much. It's fun. It's more fun. Coming. Apollo Tire. Apollo Tire today. Apollo Tire. Let's add up Apollo.
Next one, India Cement. Apollo Tyre has taken a breakout today. Gone. In fact, day before when the market was coming down, I was, if you were here, I don't remember. Whoever was here, you would have known. I was very keen on buying Apollo Tyre. This is what happened. So stocks which were triggered, which we were looking that day, are now getting triggered. You've had your eye on it. You had the scanner like how I have the scanner. I've caught the trade. If you had not even exited the trade today, would be a perfect time. I mean, there are different ways of looking at it. Then the last one we have India Cement. That should all done today. Yesterday's action stocks, which I showed, they should not be in action today. It should be a new set of stocks today. India Cements, as expected, started off. Clear what is happening now. Most of you now understand what that I'm looking for. I have a few more, quite a few actually, which will pop up in the trades today. Good morning, good morning. So, from this high, okay, did not take off, did not come here. This here, let's see. The highest area hit by, oh, we are way above. Let's see, we on all the way here now. Get on to 877. Good morning. A lifetime high on what's the lowest Nifty should go now? Think about it. I just have to toggle this here. This is the lowest level now expected. Need to wait till here.
Ooh la la. Horizontal line. Oh, where the target is going to be. अब तो हो गया गैस को ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा. छोटा करेक्शन बनाएगा, ऊपर जाएगा, छोटा करेक्शन बनाएगा, ऊपर जाएगा. 18,770 है. देखते हैं 18,770 पहुंचने के फिर करेक्शन क्या आएगा, उसके बेसिस पे कहां तक आएगा. ये आपका स्टॉप लॉस बन गया. अभी ये हो गया. कीप ट्रेलिंग विद दिस स्टॉप लॉस इफ यू हैव अ build up on this topic today. So if you have a doubt on where these lines have come from, go and watch their live sessions. Really come from width of this to correction. The correction, smaller correction to the other side is the correction. The larger price movement is the larger price movement. If you see, the same thing is repeated. Whatever has happened in the past is happening continuously. Keep moving. Now, yesterday somebody was asking a question. Sir, how do I trail? Now, this is how I trail. Take the width. Whatever is the earlier correction, same correction happens. Market keeps doing more or less than the length of this and keeps going up. Less than the length, more or less the length of this, and I keep this wherever from the every high that it makes. So from here, even if yesterday if it bid, this is what it has been less than that. So it kept on trailing this. You would still be in the trade all the way from here till now. That is one way of using the dynamic correction. Today I will be only focusing on Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, and stocks which appear on our scanner. Please don't ask me to look at the stocks because then I get a little bit, not say confused, not thinking anything, tension. Plus, I also need to talk continuously, so it's a little difficult to do all these charts and follow the markets also. Sometime in जाएंगे यहाँ तक 18,877. Last high was 18,900. Yeah. Nifty is almost ready for a breakout or high. Iricha.
Oh, yes, we should be going up. For the last time, the blue line is the 34 period moving average. Please don't ask the same question again. If you want, go back to the earlier sessions. I've explained a lot of whatever is here. रोज वही वही बोलते बोलते में ही अटक गए. ये 5 है, ये 13 है, ये 34 है. Question is there any significance of looking at open interest data live and end of day? I mean, all those. Absolutely none. As I said before, technical analysis does not look at that at all. Open interest data is when you have volume in the stock market, you have open interest in the derivative market. If you are trading pure options, then start looking at it. But what has, except the other pure technical data, there's no need to look at the fundamental data, because the fundamental data doesn't make any sense. So coming back to it, open interest. What do you understand about the open interest? So far, you must have realized by now that most people don't even understand a correction, a simple trend, a swing trend, and a complex trend. Simple trend, swing trend, and complex trend itself is not understood. They are open interest, FI, volumes, this volumes, ये सब high level data analyze करके आपको क्या समझ में आएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सब, जब बेसिक ही नहीं पता तो मैं आगे चल के क्या कर लूंगा? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बेसिक्स ही नहीं पता. How do you look at a chart is not understood. Then how do you actually think of I will be able to do other things, understand deeper markets? It's just not possible. So better to keep yourself limited to the simplicity, because in the simplicity lies all the advantage. Uh-oh. As long as, what have we done? Nothing now. After the first bit of analysis was done, we are continuing that analysis. And now what is happening? Also, ये भी सोचो, ये दो ट्रेंड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है. ट्रेंड डाउन होने के लिए पहले ये दोनों को टर्न करना पड़ेगा ना. जब तक ये टर्न नहीं करेगा, जल्दी क्या है सबको, चलने दो. Yeah, we are what, 150 points away from yesterday when in the evening when the markets were down. I don't know if any one of you were following on Twitter. There was so much discussion going on of what the market will do. आज तो इसको ऊपर रहना था, नीचे होना था, ऐसा होना था, इतना भी सपोर्ट नहीं कर सका. कहाँ, where is the need for now to support Nifty? So you must have seen this morning, none of the correction is deeper than where we started off. Morning mein, if you were seeing from the high, the spike high, yes, you get a doubt. But if you see from yesterday's high, it is a perfect low caught today. After that, it is just going up and up and up with the corrective low not being touched. चल रहा है, चलने दो. Simple.
So if you imagine what would have had if you had bought calls here. We will get into trading options and all later. Maybe next month I will show how we trade options and hold all of that once we understand the charts. पर यहाँ से निकला तो वो चलता ही रहेगा ना. अब किसी को बोलो हमने यहाँ आजकल लो पे लिया, इधर इधर खरीदा, पागल है, इतना मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और ये चल रहा है. The problem is not with the analysis, the problem is with the person who's lying there. See, now you know if you are long, do you have any tension all day? Today is a no-brainer. वो ऐसे चलता ही रहेगा. I hope you understand what I'm saying. ठीक है, ये आ गया. ये देखो, इसको ऊपर करते हैं, इसको लाते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको लाते हैं, वो चलता ही रहेगा. Once it goes above this, इसको ऊपर लाना है, ये ब्लू येलो लाइन को इधर लाके इस पे रखना है, फिर वो जो हाई है उसके ऊपर ये येलो लाइन को. Okay, let me make this red so that it becomes our stop loss line. Oh, red is not red color. Stop loss. अभी तक तो ये स्टॉप. इसके ऊपर गया तो इसको ये करेंगे. ये इधर लो लगा के लास्ट हाई के ऊपर गया तो ये लाइन पॉइंट विल बिकम माय नेक्स्ट पॉइंट टू प्रोजेक्ट द येलो लाइन. सिंपल. ये क्या कर रहा है? क्या there can be not much change. Same. What scale? It's auto scale. There is no scale. It's measurement. The measurement previous high to low. The scale doesn't make any difference. Set at a fixed number of points. No scale here. Doesn't make a difference. And the scaling makes a difference. Like in geometry, I will tell you it is the scaling. Like for example, if you see here my rated angles. दिख रहा है? There's a method in this madness. Know how to use this. Coming very close to this. Here. Think because of this, put a bottom here, where here or in this bar. Very icon. Look. So here. Ramjit Kaur, I am hiding you from the channel for repeating the same thing again. Cannot see the angles in the screen because
What's going on? Condition excellent है ना? Can you see it now? Or is it still buffering? Is this no buffering? I think you can see it now. Condition says excellent. Please let me know. Can you see it now? Yes, we're here by 9:55. I think a bottom should be seen again and then up. Absolutely, after yesterday's streaming at 2100 kbps. Today morning the stream changed to 21,000 kbps. Bitrate, video bitrate. 21. 10 times the multiplication. Plus, not using the graphic card today. The system is set to use the graphic card. Should be much better. I can even stream movies in HD and games, I believe. Should. So now coming back to it, let's take out these angles. Angles we need right now. See how it comes down. अभी तक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, चल ही रहा है. Keep going, keep going, keep going. If you do it on a daily chart, sometimes you will go, especially with stocks, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 हो गया, 20 हो गया, 34 हो गया, 56 हो गया, और चल ही रहा है, पर stop loss hit नहीं हो रहा है. Why that stop loss is not hit? Because that stop loss is defined by the market previously. हो गया. Every time it comes down, go and watch on other spaces, on Twitter, people will say, यहाँ टॉप लगना चाहिए, यहाँ टॉप लगना चाहिए. आपको डर रहता है कि यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिर रहा है, ये टॉप नहीं हो जाए, ये टॉप नहीं हो जाए. And look at this, even at the highest high, we just relax. यहाँ तक आएगा तब सोचेगा, तब तक नहीं सोचना है मेरे को. Absolutely calm, peaceful, शांति से ट्रेड करो, फिर देखो पैसा मिलता. ये देखो अपोलो टायर कहां आ गया. So this is what I mean by these are not patterns which will fall. There can be a short fall, but ultimately इसका end resolution यही रहता है. I hope that clears confusion for everyone. So, falling pattern is never like this. थोड़ी गिरता है मार्केट, ऐसे तो ब्रेकआउट होता है.
मार्केट कभी ऐसे गिरता नहीं है, गिरने का पैटर्न अलग है। नया हाई बना रहा है, बनाने दो उसको। वंस नया हाई बन गया, अपना नेक्स्ट काम क्या है? बहुत सिंपल, तो उठाओ इधर लगाओ, तो उठाओ इधर लगाओ, इसको उठाओ इधर लगाओ हाई पे। नेक्स्ट क्या होगा अपना टारगेट? ये हो गया 18905। स्टॉप लॉस क्या हो गया? पहले नीचे था, अभी और ऊपर आ गया, स्टॉप लॉस आ गया 18833। For those working full time, how to do? Those working full time, how to do? For that, you have to start using the daily chart. Rule is the same. I told you the same thing yesterday. Rules are the same, whether it is daily chart or 1 minute chart. Apply it on a daily chart. You know where your stop loss is. You can keep it and go for your work. You apply it on a 1 hour chart. Where your stop loss is. Apply it on a 3 hour chart. Simple. तब ये नंबर ऑफ व्यूअर्स 500 पे पहुंचेगा ना, तभी नेक्स्ट सीक्रेट दिखाओ, तब तक कुछ। The first target, have 500 people at least watching, इतना मेहनत करके जो बोल रहे हैं 2 दिन। All charts same moving average. Keep the same moving average. Third, on ABFRL, if you remember, I had talked about ABFRL yesterday. Aditya Birla Fashion. About it yesterday. होगा, राउंडिंग बॉटम है 5 मिनट चार्ट पे, ये ऊपर जाएगा, is it 214 up, take off, simple. The decision is not correct, Maulik. There is a lot of truth in GAN, but don't expect to find it so easily. Many people struggle with GAN, and there are a lot of people who will cheat you of money. So unless you find a really good teacher who will teach you, there is no point in trying to learn it all by yourself. It becomes difficult.
or if you want to, whatever I'm using is, if you actually understand, whatever I'm showing since yesterday is pulled up from tunnel through the air. It is not my own system. How did I come up with this? This is pulled up from tunnel through the air. But the point is, you have to decipher what he has written. You have to understand what he has written, then work on it. So I hope that that is clear. You can leave. ज्ञान सीखना, एवरीवन, सबको सीखना है. एक कार है रोल्स रॉयस, हर आदमी उसको खरीदना चाहता है. समझ रहे हो? हर कौन सा आदमी मर्सिडीज और रोल्स रॉयस नहीं चाहता है, ये बताओ. ऐसा कोई है? नहीं ना. But can everyone afford it? Everybody cannot afford it. So that is where is the point. अगर एक रोल्स रॉयस बिकता है, तो the whole country you have people buying all kinds of cars. So think about it like that. From the cycle से लेके नैनो से लेके मारुति से लेके रोल्स रॉयस तक सारे type of cars है. What are they? They are all means of travel from one point to another. Technical analysis is also like that. From basic simple trend line to the cheating to the divergence to RSI to GAN to Elliott to GAN. All these are different levels or different kinds of luxury of the market. What it will give you? It will give you a facility to buy at the low, sell at the high. बराबर है. पर वो कार लेके आप एक्सीडेंट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो. सिमिलरली सेम थिंग. अब आपके अफोर्डेबिलिटी, आपका इसके ऊपर क्या है, इज द क्वेश्चन. नाउ नैनो में बैठ के जितना रोल्स रॉयस जाता है उतना ही आगे जा सकते हो. हाँ, जा सकते हो, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. That is the only difference. Don't think just because you learn GAN, you will become an international master in one day. It doesn't happen that way. There is no Ramban Ilaj. So think about it. It is not that just by understanding the trend lines properly, you will not be able to make money. You will still be able to make money. I hope that makes it clear for you. ये देखो निफ्टी 1 मिनट चार्ट. वेयर इज द प्रॉब्लम? आ रहा है ब्लू लाइन तक के नीचे, टेस्ट करने भी आ रहा है कहीं. जब तक इतना नहीं गिरता है तब तक देखते हैं ना. Where is the target? 908. 908 लगाते हैं इधर तो ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना. पड़ेगा. सबको लगता है मैं इधर कोई मैजिक दिखा रहा. कोई मैजिक नहीं है. फुल स्ट्रेट. मैं तो एवरी डे ऑनलाइन आ जाऊंगा. आप हेल्प कैसे करोगे? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. द मोर यू लाइक, द मोर यू शेयर, द मोर यू सब्सक्राइब इज द बेस्ट वे टू हेल्प मी. नाउ अभी किसी ने कोई सोचा नहीं है. किसी के आई एम श्योर इतने लोग जो देख रहे हैं लाइव, किसी के दिमाग में ये पॉइंट नहीं आया कि इसको इजी कैसे करते हैं, मेरे को विदाउट चार्ट कैसे ट्रेड कर सकता हूँ.
किसी ने नहीं सोचा. If you are here till evening, somewhere in the day I will tell how to make this whole process so simple and easy. चार्ट ही नहीं चाहिए. एक बार समझ गए तो फिर ऑटोमेटिकली वही प्रिंसिपल लगाते जाओ, चलता ही रहेगा. मोबाइल लेके ट्रेड कर सकते. यू डोंट नीड अ चार्ट. आपको see, let me see. Again, for me, from learning to deciphering was almost 10. Say it's about a 10-year journey for me. Understand one thing, that when I started fully researching GAN, by then I had also spent a lot of time in the markets. I had also spent about 20 years in the market. Sensex made new high. चलो, ये पॉइंट के नीचे आता है. एंट्री किधर था? यहाँ कहीं, ये ओरिजिनल एंट्री था, फिर भी नहीं तो यहाँ था. तो कितना पॉइंट मिला? 720 से 840. 120 points in one day. How much has Nifty given yesterday and today? LT फाइनेंशियल होल्डिंग्स कल मिला था. बैंक still waiting one. Up, but I was expecting escorts to come down. If
Where is the resistance? If you're sitting in shorts, where is the resistance? If there was a resistance, it should have kept on going down. Where is the resistance? The market here for me, fortunately, you were here yesterday, I would have got you out of your shorts or would not have gone in. This market is, where is the resistance? There is no resistance here. It is just flowing, taking a pause and jumping, taking a pause and jumping, taking a pause and jumping. I'm looking at 18908 right now. Let's see. Just not hitting stop loss. See the reluctance of market to move down even to test this bottom of the blue line. As soon as it drops halfway through it, a little towards it, and then it certainly starts going up. How it is going up. So till that bottom of the blue line is not taken off, शांति रखे, देखते जाओ, मस्त मजे देखते जाओ. मेरे को तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखता है. कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखता है. मार्केट तो एकदम अपस्विंग में. मार्केट इज इन सॉलिड ग्रिप ऑफ द बुल्स एट द मोमेंट. इधर फंसाया, मस्त फंसाया 2 दिन, सबको लेके आ गया, खत्म. आ जाओ अभी और आ जाओ. You can consider what you want. Wish. They're not based on sound technical analysis. I'm sorry. That's what the market is telling at the moment. सैटरडे को या संडे को करते, प्लान करते. I think better to do on a Sunday for about an hour to say, ask whatever you want. और 1 घंटा से ज्यादा नहीं करना चाहिए. At least I hope यहाँ टाटा कंज्यूमर, कल कोई पूछ रहा था टाटा कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर. निकलने की तैयारी. This is what my scanner does when market make patterns like this. जब भी ये ऊपर निकलने की तैयारी करता है, उसके पास आते ही बोल देता है, इसका ध्यान रखो. बस इतना ही चाहिए. Number
we're here the turn to happen. आ गया, correct. आपस ऊपर घूमने लगे अगले लगा दो, ये हो गया काम. इतना I don't look at all of that strange pressure unexplainable. मेरा चार्ट क्या बोल रहा है? मेरा चार्ट बोल रहा है मैं 908 जाऊंगा अभी on a intraday basis, है ना, ऑन ए शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बेसिस. मेरा स्टॉप लॉस इधर है, आप इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट करो या टारगेट हिट करो, दोनों के सिवाय आप निफ्टी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. आप कॉल बेच लो, पुट बेच लो, स्प्रेड बेच लो, कैलेंडर स्प्रेड कर लो, 1,00,000 कॉल बेच लो, 50 लाख पुट बेच लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारे को. मेरे पास एक टारगेट है, एक स्टॉप लॉस है, दोनों में एक हिट होगा गारंटीड. और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस रिवाइज होता है, अगर वो हाई उधर ही रहता है तो मेरा स्टॉप लॉस उधर ही रहता है, अगर नया बॉटम बनाता है तो मेरा टारगेट रिवाइज होता है. तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द मार्केट स्विंग इज मेकिंग अ न्यू हाई और अ न्यू लो, माय टारगेट, माय स्टॉप लॉस इज कंटिन्यूअसली गेटिंग रिवाइज्ड. So I am caught on, I am stuck in the right side of the market all the time. That is all that I care about. The only time I will make a big mistake is about by 30 or 40 points of a complete high and a complete low. उससे ज्यादा तो एक स्विंग में ही तो पकड़ लिया इतना सारा. जल्दी क्या है, बैठो शांति से. सिंपल. वो इतना सारा कॉम्प्लेक्स एक्साइटमेंट नहीं चलता है. लुक एट मी. Do I look like a man who wants excitement? I want money, 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 money. Give me money, I'm more than happy. I don't want excitement from the charts. Simple. Let it go on. क्या फर्क पड़ रहा है? सब लगता है ये सब ना, ये स्मॉल वॉल्यूम पे ये नहीं होता है, लार्ज वॉल्यूम पे वो नहीं होता है, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाते हैं. ये होता है, वो होता है. अब 2 दिन से मार्केट तो चल ही रहा है ना, फोरकास्ट बराबर, कोई डाउट. हाँ, यहाँ वो परसों भी जब मंडे को जब मार्केट चालू किया था तभी बोला ये गिरने वाला मार्केट है नहीं, ये ऊपर जाना है, पेशेंस रखो, मिलेगा. Those who have been patient for the last 2 days and with me to completely, they have been seeing what is happening exactly. When this turns, उस टाइम पे भी पकड़ेंगे. जब ये टर्न आएगा, ये होगा, तभी भी पकड़ेंगे. इंट्राडे में एवरी मूवमेंट ऑफ द मार्केट अप और डाउन हैज टू बी कॉट, बट यू कांट कैच इट लाइक 5 मिनट चार्ट लिया, मैं इधर बेचा, इधर खरीदा, इधर बेचा, इधर खरीदा, इधर बेचा, इधर खरीदा. वो नहीं हो सकता. दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. दैट इज प्योर स्कैल्पिंग विच इज इम्पॉसिबल टू डू. आपके पास आपका चार्ट है, इसके सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो. बाकी सब क्या
वो जैसे इट इज सेड इन दिस इन ऑल द रिलीजियस बुक, शैतान आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके टारगेट से। हाँ, वो सब शैतान है, वो आपको ये वो ऐसा वैसा बोल के आपका जो इमोशन है, जो बिलीफ है, फेथ है, सिस्टम है, सब कंफ्यूज करके जाता है। डोंट लुक एट एनीथिंग, चार्ट इज योर ओनली फ्रेंड बिकॉज इट इज रिपोर्टिंग फैक्ट। एंड चार्ट भी तो 5 ही चीज बताता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम। बाकी सब आपको समझना है। टाटा कंज्यूमर और गया ऊपर, और गया। ऐसे कैसे जाता है, ऐसे कैसे जाता है? My scanner had caught it here. बस 66 में एंट्री किया, 76 आ गया, 1% मिल गया दिन का। बहुत हो गया, 1% इन प्राइस बहुत हो गया। क्या कर रहा है ये, देखते हैं क्या करता है ये। Coming very close to it. Yeah, no. Will we hit this? ओ, ऐसा भी प्रॉब्लम है। आहा, come on. Oh goodness. Hey. बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? क्या हुआ भाई टाटा मोटर्स? What about Tata Motors? Tata Motors.
Just need to observe. छोड़ो ये कहूँ करे हमने जो देखा था सुना था Green line touching the red line is what? What? What does it mean? I had explained it to you yesterday. वाह, बहुत जल्दी है, किस लोगों को बहुत जल्दी है मार्केट को नीचे भेजने का. Alert, Aarti Industries. Time to go long. Aarti Industries. Aarti. Aarti Industries. Break out. भाग जाएगा ये ऊपर अभी. वाह. बदनाम होना था. करने दो पहले. Let it take off this high, then we will shift this one. Till it doesn't take off the high, you cannot shift the bottom higher. Right now, the projection for this is of the last low. Now this low is higher, but
that will become higher only when this low or this high becomes lower than the next high. Wait for it to take it up. Sorry, maybe you could not see the screen. तो हायर ये लाइन को ऊपर शिफ्ट करने के लिए ये हाई के ऊपर जाना पड़ेगा ना, नहीं अभी शिफ्ट करूंगा, उससे पहले शिफ्ट नहीं कर सकता। ये तो ये हाई है, हाई से ये रिट्रेसमेंट वाला लाइन आएगा, तो से ये टारगेट वाला प्रोजेक्शन। So at all given points of time, we don't do any calculation. Let the market show where I have to calculate from. तो मार्केट नहीं बताएगा मैंने क्या करना है, चलने दो, चलता रहता है। After some time, when you have worked with the charts for a long time, maybe 3-4 years, 5 years, you have studied 510 lakh charts, then situation will come. You don't have to say anything. अरे यार ये गिरने वाला पैटर्न नहीं. You practically don't have to think. Lies a lot. The suggestion is for those who want to take up trading seriously, think and work with charts. Should become as unconscious as driving or चलने के टाइम पे सोचते हो यार ये टांग ऊपर रखना है, फिर नेक्स्ट लेग अप. Started learning in childhood, learned. That's how everybody learns. You should make looking at the chart so natural. Definitely the chart should tell you, yeah, am I going to fall or am I going to continuation pattern? The minute you master these two things, reversal and continuation, the market has got no surprise irrespective of whatever people say. Whatever people may come and promise you, ये है, वो है, ये है, चार्ट वही करेगा, मार्केट वही, किसी का कंट्रोल नहीं. Here you can pattern see now. Inflation going up in India, not in India. Just don't they want to? They raise the interest rate as they want. They cannot. They are also even the biggest granddaddies. US Fed also has its own. It cannot do everything that it wants. The chart is the one which is always telling you, not actually the chart as such, but it is a price which is telling you what is it and what is. Just follow that and you will never be wrong in your life. बस हाँ, चार्ट को कैसे स्टडी करना है ये सीखना जरूरी है.
हो गया, जल्दी भी हो गए थे, हर बार नहीं। हो गया अपना ट्रेड बंद, खत्म। Now we will watch and see if this will be reached. What will happen at that point?
Now, with this upswing coming up till here, this is a perfectly acceptable 1, 2, 3, 4, 5. Hope that makes clear for everyone. This can be a perfectly acceptable. And तो साइन है डेंजर का। पता कैसे चलेगा कि यहां से कैसा हिलेगा? This is correct. Still not very convincing क्योंकि ये बहुत डीप आ गए हैं। This is correct. But very fast. तो जो एक्शन देगा पे अपना आगे का प्लान बनेगा। इतना तो बनाएगा मैक्सिमम। This was the largest the earlier down. But what it will. Here it has the potential down, it has the potential up. Just wait, has the potential. Now we are out of our trade. जो ट्रेड से बाहर निकल के अभी बैठे, अभी शांति है। अगर इसके ऊपर इसके नीचे जाता है देन वी स्टार्ट लुकिंग एट इट। जब निफ्टी इसके नीचे जाएगा तो ये दोनों मूविंग एवरेज जो है ये ब्लू लाइन के नीचे आ जाएंगे। टेक्स टाइम फॉर इट टू हैपन। ये दोनों ब्लू लाइन इसके नीचे आ जाएंगे। जब ये दोनों ब्लू लाइन इसके नीचे आ जाएंगे देन यू विल बी ओनली लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड्स। फिलहाल तो in the 5-minute chart, Nifty is still in the long range, but not the time to trade. ये could be, still be, ये सब मतलब could be, still be, can be में trade नहीं होता है। Have some certainty of what you're saying. If you don't have any certainty of what is being said, it is very difficult to trade. It is done. Just waiting for it to start coming back up again. If it break long way away, 18831 और 18808 के में फासला इतना दूर है, उतना करने में बहुत टाइम लगा। Depends on how it goes from there. It is right of ABC X सभी CX ABC could be not much noise in the market.
प्रेम सिंह जी, इतना कर लिया तो मेरे को भी कुछ दो। Just joking. ट्विटर पे एक हमारे शरद भाई है, इतना कमा लिया तो मेरे को भी कुछ भेजो। Market is so boring and dull, no? Yes. अच्छा, कोई एमएफएसएल में भी क्या बात, गुड। सर वेकी, ओ लाला, शुड गो अप करंट टॉप 680। ओहो, 2 चला गया कल से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। भाई सपना ही रहेगा या ये डीपर करेगा? ऑल टाइम पब्लिक को शेक आउट करके ऑल टाइम हाई आएगा। बिफोर क्या होगा देखते हैं, क्या क्या होगा, बहुत कुछ होना बाकी है अभी। और यहां तक आने बहुत टाइम है, ये नहीं करने का।
ABC. वाइड ब्रॉडनिंग से तो पैरेलल बेटर है ना मालिक. 1 2 3. हाँ उस करो, करना बेटर है. हाँ मेरा भी पैरेलल. तो ये काम को सेटअप करते हैं. तो बैठा नहीं जाता, ये नहीं, तो फिर पैसा भी नहीं मिलेगा. साइड फॉर योरसेल्फ. बट डू यू वांट पेशेंट और तो चल खुद जल्दी क्या है. अगर आप 6 महीना मेरे साथ में ट्रेड करोगे तो आपको दिखेगा. मेरा ट्रेड करोगे नहीं, मेरा ट्रेड देखोगे तो आपको दिखेगा. कम ट्रेड विल एक्चुअली स्टॉप लॉस. Stop loss is not a tool. Stop loss is a method to keep you on the right side of the market. अपने पास क्या है, अच्छा ये हो गया तो स्टॉप लॉस लग जाएगा ना, फिर क्या टेंशन. अरे ऐसा करते करते तो 50 स्टॉप लॉस लगा दोगे. ऐसे थोड़ी चलता है. स्टॉप लॉस हैज टू बी वेल थॉट ऑफ विद अ रीजन, विद समथिंग. इसीलिए तो जस्ट बिकॉज यू नो हाउ टू पुट अ स्टॉप लॉस और यू आर पुटिंग अ स्टॉप लॉस डजंट इन एनी वे गारंटी दैट यू विल मेक अ प्रॉफिट इन द मार्केट. Just because you know that there is a word called stop loss and people okay loss ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मैं इधर काट दूंगा, वो थोड़ी सा स्टॉप लॉस होता है. More patience you have, the better your trades will be and the more successful your trades. जल्दी क्या है. साल में अगर 20 ट्रेड भी मिले बराबर वाले, you will double your money in a year. तो उठा नहीं जाता तो अगर इमोशन कंट्रोल नहीं किया जाता then you don't deserve the money. मत बोलना कि सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा. क्या है, सब कोकेन के आदी हो गए. एक्साइटमेंट चाहिए, डोपामिन चाहिए. वो नहीं है तो अब मन ही नहीं भरता. अब एक बार हीरोइन कोकाइन का एडिक्ट हो गए तो उसके बाद में क्या बोलेंगे, शांति रखो, ध्यान करो बच्चा, तो कोई सुनेगा ही नहीं. हीरोइन, कोकाइन, ये सब किसका
एंड रिजल्ट क्या होता है पता है ना? कर रहा है। स्टॉप लॉस किया, कुछ प्रॉफिट बनाया, अभी शांति से बैठे, तू ये तोड़ भाई, ये तोड़ा तो मैं देखता हूँ, उसके बाद में फिर रिट्रेसमेंट पे फिर बेचूंगा करूंगा, नहीं तो देखते हैं, जल्दी क्या है। CNXIT is down. Yesterday market was down, CNXIT was up. Today CNXIT is down, market is up. Minor. This Nifty. ये तो नाम नहीं ले रहा है नीचे आने का। Way. आहा। आगे लेवल यहां तक, प्राइस लेवल यहां तक आने तक ये एवरेजेस आ जाएंगे अब पास में। तो ऐसा क्यों आएंगे? No, everything is fine. There's nothing, no issue. Absolutely no issue at all. I have less than 0%. I have what? 0% drop frames. Absolutely everything is going very smooth and very perfect today. Today, tomorrow, yes, there is summer solstice. They can act as resistance. आप ढूंढते रहो, चलेगा। मैं बहुत कुछ दिखाता रहता हूँ।
थैंक यू। और इम्प्रूव करेंगे और बहुत कुछ, पर नाउ अ लॉट ऑफ इट विल बी डिपेंडेंट आपका इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। मेरे यहाँ तो यहाँ से तो जो जा रहा है ये 4K जा रहा है कंप्लीटली। बस few more things need to be improved, which will be changed today. By end of the week we will have almost crystal clear, we should have almost CNBC like quality. Then the ticker should get activated. Have a ticker continuously going. Use a ticker, then we'll have scanner for the trading option Greeks is going on. वो भी आ जाएगा ऑनलाइन, तो मार्केट में फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग वो भी ऐड हो जाएगा। आई हैव माई ओन सिस्टम्स, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग करने के मेरे अपने सिस्टम है विच आर वेरी डिफरेंट जस्ट लाइक दिस फ्रॉम व्हाट यू नॉर्मली सी। एंड ऐसे ये जो ट्रेंड लाइन लेके सिंपल किया है, ऐसे मेरे पास तो 500 सिस्टम है। बट ओवर ओनली एक दिन में तो सब कुछ नहीं दिखा सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली, साल भर में धीरे धीरे एक दिखा होगा। जैसे कल मॉड 360 वाला दिखाया था। सो देयर आर क्वाइट अ लॉट वी विल लर्न एज लॉन्ग एज यू स्टे अराउंड। Only audio video quality like CNBC, not content quality. कर दूं action, forget for this. Patiently. बोला नेक्स्ट सिस्टम व्हेन वी कम टू 500, दिस नंबर हियर जो 112 दिख रहा है, इसको 500 करने में हेल्प करो मेरा। नेक्स्ट सिस्टम, इतने सारे सिस्टम है इजी करने। सी द रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट फॉर इट टू गो डाउन। लुक एट निफ्टी, ये एक लेवल तोड़ा के बाद में सेकेंड लेवल तोड़ने में परेशान हो गया। अभी तक इट इज लॉट ऑफ सेलिंग इज हैपनिंग, देयर इज prices are closing towards the lows continuously, whereas when the market was going up it was smooth sailing, छोटा correction ऊपर। So once it breaks this length of the biggest correction, then what will happen is it should make a small correction come down, let's see if we'll get the first small correction to the upside, उसके बाद में क्या होगा। विदाउट चार्ट मेथड आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। कल मैंने इतना सारा बोला विदाउट चार्ट मेथड यही है, अपना दिमाग लगाओ, इसको ले जाओ 500 तक, फिर मैं दिखाता हूं दिमाग कैसे नहीं लगाया। आपके सामने है मेथड। Nobody is using their brains. Very few people actually think, what am I talking about? That is the whole problem. You only take the surface level information. You are not taking the deeper level information. जब deeper level information लेते हो तभी आपको hidden meaning दिखता है। एक बुक है बाय W.D. गैन विच इज कॉल्ड टनल थ्रू द एयर। इसके अंदर ट्रेडिंग के सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। सब लोग उसको पढ़ते हैं, सर समझ में नहीं आया करते हैं। द पॉइंट इज सब लोग अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर के पीछे इंटेंशन क्या है वो कोई नहीं देखता है।
वो अक्षर पढ़ना तो सब जानते हैं, भी ABCD पढ़ा, जिसको भी लैंग्वेज आता है वो समझ जाता है कि अक्षर क्या पढ़ा। The tunnel through the air. This is a book. The original book. PDF मिल जाता है। ओरिजिनल बुक खरीदने जाओगे आपको सिर्फ ओरिजिनल बुक 22,000 रुपए का। इससे बेटर है PDF खरीदो, पढ़ लो। PDF खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिलता है। It's the same original book. देखो ऐसे पूरा नोट्स पढ़ता है। What pay, what he has, what why he has said, why it is. What is the invention? First Bible, first year. Lot of information. You have to do your work. Just paying lot of money to other people. वो पैसा ले लेगा आपसे. Truly speaking, don't waste your money like that. Very few people will understand GAN and very few people will teach you. जो भी सीखोगे अगर बराबर सीखो, whether even if you learn candles also, अगर आप कैंडल्स भी समझते हो तो कैंडल समझने से make a lot more money and you will have a lot of certainty provided you actually spend the effort in understanding. डेलो ब्रोक, अरे कल भी तो डेलो ब्रेक किया था इधर, क्या हुआ था डेलो ब्रेक? तो डेलो ब्रेक आफ्टर यस्टरडे अगेन यू वांट टू गेट इनटू द डेलो ब्रोकन. these are क्या बोलते हैं, बंदर को खिलाया तमाशा करने के लिए, ऐसे सब ये है. डोंट फील बैड. वो बंदर को नचाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ डालते रहते हैं उसको. अच्छा चल तो ये खा ले पर ये नाच. Like how they try. This is exactly what is happening. Days low broken. Some people talk about days low being broken. कोई दो चार एनालिस्ट बात करते हैं, वो एक दो बार सक्सेस हुआ दिखाते हैं. पर डेज लो बीइंग ब्रोकन आपने कभी देखा है लाइफ में? पीछे 10 साल का रिसर्च करके I'm sure very few have actually seen what happens if the day's low is broken. It has got practically no importance, no value if you actually apply it. And देखोगे ये कई बार होता है, कई बार नीचे जाता है, कई बार ऊपर भी आता है. क्लासिक एग्जाम्पल था कल, नीचे गया था ऊपर आ गया.
हुआ क्या, एक और टॉफी मिल गया ट्रेडर को, डेलो टूटा, डेलो टूटा, डेलो टूटा. And the smart trader is looking, understanding all these things much more intelligent than you. अच्छा डेलो टूटेगा तो तू बेचेगा ना, चलो इसको डेलो तोड़ो पहले. कल ही किया, एग्जैक्टली कल ही किया. इधर डेलो तोड़ा, खिलाया, इधर माल खाया, इधर सब तो खा ही रहा था. उसके बाद लेकर आ गए, खींचे इधर आए, ब्रेकआउट करेगा. पीपल वुड हैव बीन लाइक, तो ठीक है, यहां से ये लेकर आए नीचे. हाउ डू यू कंट्रोल योरसेल्फ इन सच केसेस? दैट इज ट्रेडिंग. हाउ डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? दैट इज ट्रेडिंग. You will never ever go short like this. If you are buying, buy at a low. If you are selling, sell at a high. Meaning, I'm not saying sell at this high. I'm saying ये भी इसका ये corrective ये आता है. That is the high you are selling at, expecting one more movement in this direction. क्यों? वो एलिट वेव के जब भी करूंगा तभी आना तो समझ में आएगा यहाँ पे क्यों बेचना है, यहाँ क्यों नहीं बेचना है. There is a reason. Yesterday also we did not buy here, we bought here in this range. We didn't buy here. ये हाई के ऊपर आ गया, खरीद लो. We didn't buy here, we bought here. Take the larger trend. इतना गिरने के बाद we bought here. If you're still looking at a larger trend, you should have bought here. That is the point. You see, that is the point. Patiently समझो, बहुत कुछ समझने को है, बहुत कुछ मिलेगा. ट्रेड तो जल्दी मत करो, ट्रेड बहुत मिलेंगे. पूरे महीने में 10 ट्रेड करो, बट 10 के 10 करेक्ट करोगे ना, ज्यादा पैसा मिलेगा. 500 करोगे, 500 में 450 गलत है और 50 करेक्ट है. थिंक अबाउट इट. दैट इज योर. मैं ट्रेड करूंगा तो हिट होना चाहिए. सौ ट्रेड करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 लॉस होना चाहिए. अरे बोलना बहुत इजी है. कूल क्रिकेट, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स. व्हाई डज इट हैपन? मिस्टर कूल क्रिकेट नाम ही नहीं है इनका. क्या करते हो भाई? Earn. Oh, yesterday there was what? GW Steel. Many resistances. ये चालू हो गया ना. ऑन अ डेली चार्ट इट इज गोइंग ऑल द वे टू 520. अब इसको रोक सको तो रोक लो. 520 जाएगा. अब ये नहीं रुकेगा, किसी का नहीं रुकेगा. उलाला 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 उलाला.
with that broken, let's see, we will get a correction to this level. Get a correction to that level, we can go short, looking for a short trade. ये जो अपन करेक्शन लेके कर रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप अभी इंट्रोड्यूस करूंगा. Wait. How you move from one range to another. बनने दो, फिर समझाता हूं. नेक्स्ट टाइम यू विल अंडरस्टैंड. पैसा कौन देगा? बुक तो मैं लिख दूंगा. आजकल के इंटरनेट जमाने में मैं पब्लिश करूंगा, नेक्स्ट डे इंटरनेट पे पीडीएफ में फ्री में बटेगा. मेरा 1-2 साल का मेहनत वेस्ट. बेटर ये नंबर भी 15,000 जाएगा ना, उस दिन एक दिन मॉर्निंग टू इवनिंग टनल थ्रू द एयर कंप्लीटली डिकोडेड एंड एक्सप्लेन्ड वाला सेशन लगा दूंगा. फ्री, सब लोग देख, हो जाएगा खत्म. कौन सा इंस्क्रिप्शन तोड़ के दिखा दो? बुक खोलेंगे, एक कॉपी खरीदेगा पब्लिक, ओपन करेगा, उसका फोटोग्राफ लेगा, सारे फोटोग्राफ्स एक पे जोड़ के नया पीडीएफ बना देगा. It's so easy to break. Probably you don't, a lot of people don't know. Last year, 2022, yes, I had started a GAN mentoring program of 12 months. 2 महीना चलाया, 8 वीडियो भेजा. Every week 1 वीडियो. इंडिया के कुछ जोकर आए, सब्सक्राइब किया, और उसके बाद में एक सूरत का या बड़ौदा का कोई एक जोकर ट्रेडर है, अपने आप को ज्ञान मास्टर बोलते. His name is नीरज सूरत वाला. He took the copies. I mean, he sent one of his students to take the mentoring program, took the videos and started circulating online. I felt so bad. I was putting in all the effort, trying to teach, trying to train people and give real good information.
देन स्पेशली इन इंडिया ये ज्यादा होता है. स्टूपिडिटी किया, मेरे को करना ही नहीं है, बंद करो. सी, ये लॉलीपॉप दिया था ना इधर, आज का डे लो ब्रेक किया. अब टेंशन में आ जाएंगे सब. अरे आज का डे लो ब्रेक किया, फिर भी ऊपर आ रहा है. समझे? समझा करो हाउ द स्मार्ट मनी ट्रैप्स यू गाइस, ट्रैप्स द रिटेलर. डेलो ब्रेक हुआ, कितने लोग, कितना ऑप्शन बेचा होगा. ऐसे सब में ट्रैप हम होते ही नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट लेके चल रहे हैं. 3 लाइन में तो पूरा गेम, 2 ही लाइन में तो पूरा ट्रेडिंग चालू है. 500 और चीज देखने की क्या जरूरत है. Am I seeing open interest? Am I seeing anything? Everything is in front of you. देखो निफ्टी यहाँ पे वहीं पे खड़ा है. The pattern which is forming is extremely dangerous for longs, but still जब तक उसका टाइम नहीं होगा तब तक नहीं आएगा. No, I cannot give you advice on specific stocks. There is no trading advice. Can we buy? I don't know. You buy if you want to buy. I am only sharing what trades I am doing and why I am doing. There is no trading advice given to anyone. Don't. Disclaimer चालू था. चलो कल से डिस्क्लेमर का एक करते हैं. हर 15 मिनट में डिस्क्लेमर आना चाहिए. फंस गए. फुट खरीदने वाले फंस गए, कॉल बेचने वाले फंस गए. इधर आरती इंडस्ट्रीज इज फ्लाइंग. गुड, वेरी गुड.
Very good. That's my scanner. बोलते थे ऐसा कोड नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा पैटर्न नहीं पकड़ सकते। पैटर्न पकड़ के दिखाया, ऑटोमेटेड करके दिखा दिया, हो गया। Just using the scanner is enough to make a ton of money. Okay. Now watch, see this, how things are different. ये बड़ा ड्रॉप आया, एक्चुअली ये ड्रॉप होने के बाद में इसको हर लो पे लगाते तो अल्टीमेटली आके इसको एग्जैक्ट ये पॉइंट पकड़ता। You see this? Here is the top. So if you keep posting, so you have this target also done after everyone. Now you have kept this. Now if it goes above this, then we will see. If it goes above this, we can think of long. But if it starts coming down from here, keep this as your stop loss and sell. जाएगा तब तक ये घूमने तक ये थोड़ा ऊपर आएगा। What is this calculating? This is calculating the last 14 bars का क्लोज के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है। ये जब घूमेगा ये भी इसके ऊपर नहीं गया तो then you will see a repeat of like this. So you will be having a small stop loss. Sometimes the stop loss can even be 1.2 points also on Nifty, and then the target will be 40-60 points away. It all depends on the total price movement. ये अपना टोटल बड़ा इस अपस्विंग में ये सबसे बड़ा करेक्शन है अभी तक। आगे चल के दिखाता हूँ how to put as the pattern unfolds, how to put the lows and the highs and use. पहले 2 लाइन यूज कर रहे थे, अभी 3 लाइन यूज करेंगे. It becomes a little more easier. बड़े बड़े टारगेट्स मिलना चालू होगा. Let's see what if it does. Will it break above this? If it breaks above this, the trend will reverse completely and it will go and hit the top. You are not looking to go short at all. निकल गया. No, I don't. Your scanner based on elite wave? Yes, sir. My scanner is purely based on elite. Who was that who said about आज का लो टूटा? कहाँ गए सर? आज का लो टूटा. बोल दो सर, मैंने बोला था आज का लो टूटा. ये क्लासिक बुल बेयर ट्रैप था ना. हम नहीं फंसेंगे. If you are relaxed, अब नहीं फंसेंगे. When it gives a trade, then I will give the SLA. But see,
जल्दी मत करो. If long, what should be? You should not be long here. Wait, let the market prove. अब जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए? हायर हाई, हायर लो. डाउन जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए? लोअर लो, लोअर हाई. अभी एक लोअर लो बना, एक लोअर हाई बना. अभी तक लग रहा है ऐसे, ये हाई के ऊपर नहीं गया. इधर एक लो था, वो लो एक बार तोड़ा, ये लोअर लो तोड़ा. पर where are the major lower lows? They're here. So wait for it, let it form, then we will jump. Wait, patience. अभी तो 11 बजे, 2 ही घंटा है, अभी 4 घंटा बाकी. All the money is made in the last part of the swing. Initially, when the trend changes, it will always be slow. मार्केट बहुत टाइम देता है आप. Is there a way to predict whether the market is going to be sideways or trending? Earlier to Afghan? Yes. I show that in the market geometry webinar. I show that in a trading Nifty webinar. I show that in the paid webinars. The market is, then it will collapse, then it will go to the upside. क्या हो रहा है? शांति. This stochastic here, जब यहां से निकला, जो नीचे गिरना चालू हुआ, it had come up till the 50% point. The main price movement actually started after the second retest of 50% and went up. Then it made the divergence. People call for a divergence here. Okay. This is very misleading. This is not the divergence that you should be looking. The classic divergence signal is very different. When I do this stochastic webinar, I will explain in more great detail. What happened? Have we more or less hit the same level here again? जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ रहा है. Have we hit more or less the same level here again? जो तब कल से चल रहा है, कल दिन से चल रहा है और वही पैटर्न बनाते जा रहा है मार्केट. नया कुछ बनाया अभी तक नहीं. यही लेवल था ना.
नाउ फॉर अ मोमेंट थिंक, अगर आप डेली चार्ट पे यही सेम मेथड फॉलो कर रहे हो तो साल भर में एक स्क्रिप्ट पे 20 ट्रेड, 15-20 ट्रेड मिलेंगे. व्हाट इज द रिटर्न यू विल गेट? सबको यही पूछना है, सर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, पेशेंस. यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है. 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इतना नहीं लेना है मेरे.
Yes, sir. I call and trade with dealer. I never punch myself. कुछ बिगिनिंग वाला प्रॉब्लम था ना पहले 2 दिन का. एक बार प्लेटफॉर्म स्टेबल हो जाए फिर भी बहुत कुछ दिखाना है. Things which you have never seen in your life, which the professional trader in US uses. Because I have worked a lot in the US, the systems where the professional trader works. I don't want to take the names. I was working a big trading houses in the US, so there we use very different systems from all this divergence. है मैं कैंडल देखा, मेरे को हैमर दिखा, ये दिखा, ये that is all stupidity. The intelligent smart trader never looks at all of that. He is looking at ranges, he is looking at price movements, he is looking at I take positions for a long time. I take positions, I build up on my positions. And बीच में डे ट्रेडर घुस जाता है, ये करूंगा वो करूंगा. Why do I prefer bars over candles? कैंडल का बेनिफिट बताओ मेरे को. Apart from the fact that you find it very interesting and you heard some names of the candles, what is the benefit of the candle? Practically there is none. Unless you really study candles in depth. उतना स्टडी तो कोई करता नहीं है. इसको इधर कर देते हैं ऐसे और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर ये कुछ नहीं दिखता है. Just adding width and more color to the screen than what is really required. There's no difference using bars or candles. Ultimately, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ समझे हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सोचे हो, तो आप पहला चीज आपने डाउ थियरी पढ़ा होगा. ये एक्सपेक्टेशन है कि डाउ थियरी बेसिक तो समझा होगा. जब जिसने बेसिक नहीं समझा वो ये नहीं समझा कि हर बार का एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कैंडल. एक कैंडल एक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है. मे बी 5 मिनट, मे बी 1 मिनट, मे बी 1 आवर, मे बी 1 डे. तो एक कैंडल जो बनाया, ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 मिनट में. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ 5 मिनट कैंडल. दिस कैंडल इज ओनली रिप्रेजेंटिंग नेट जो एक्शन हुआ उस 5 मिनट में. क्या एक्शन हुआ ये तो हम सब पढ़ते हैं, बट द पॉइंट हियर इज ये सब एक्शन के बाद, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ये एक्शन के बाद एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट इज ऑलवेज द क्लोज. सो द क्लोज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
सो यू आर ओनली लुकिंग, जब भी आप स्टोकेस्टिक स्टडी करो, आरएसआई स्टडी करो, कुछ भी स्टडी, मोमेंटम स्टडी करो, कुछ भी स्टडी करो, आपको अल्टीमेटली आपका कैलकुलेशन और आपका फोकस रहता है ये क्लोज कहां पे आया। तो अगर ये क्लोज पे आया तो इस 5 मिनट में बुल्स ने वॉर जीता। सोच लो, ये अलग अलग छोटे 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 बैटल है, वॉर है। वॉर तो बड़ा है, वॉर तो पूरा कंटिन्यूस चालू है। ये इस वॉर के अंदर ये 5 मिनट का सेगमेंट ये एक छोटा बैटल है। दिस बैटल इज वन बाय द बुल्स। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? This implies that there is strength in the market, that the bulls are winning the war. Okay. Now this bar here, the red bar, represents that the bears have won this particular war. Or sorry, battle. This particular battle was won by the bulls. Now, what is happening continuously when the market is coming down? It is these. Look at the closes. The closes are always towards the lows. This is what represents that the bears are winning the battles. Now here the bulls are winning the battles. ये एक ही क्लोज नीचे, बाकी सब ऊपर ऊपर हाई के पास ही है क्लोजेस अगर आप देखोगे। So this is the information that the chart is giving, telling you who is winning the war. Who is winning the battle. The net result of all these battles is the war which is going on. So this is exactly how it is explained in Tunnel Through the Air. You see who is winning the battle, who is winning the war. There is a complete story about the war in Tunnel Through the Air. So that is how it is explained. You have to understand this particular point. So the closes are more important. सब लोग क्या करते हैं, देखा आज का हाई, आज का लो, ये हुआ ऐसा, they are not paying attention to what is happening. So when the closes are consistently towards the high, it represents a time when the bulls are winning the war. Meaning हर एक बैटल अगर बुल जीत रहा है तो वॉर भी बुल जीत रहा है। Zydus life भाग गया लगता है। Let's come to the chart. Life. No. किसी को डाउट है ये कहां जाएगा? Where is this likely to go? तीन दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए क्या करने वाला। देखो ये रेंज बीट कर रहा है क्या? ऑल द बेस्ट। जाइडस पे जिसने भी बेरिश बोला, गोइंग डाउन बोला, उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच। कम बैक टू निफ्टी। सी दिस अपना लेवल, हैज इट बीन एबल टू क्रैक दैट लेवल एंड गो अप? नो, इट इज स्टिल स्टक इन दैट लेवल। जब ये इधर से घूमा तभी अगर बोलते ये लेवल के आसपास आके रुकना चाहिए, वो लेवल में देख रहा हो, इट लुक्स लाइक मैजिक, बट कोई मैजिक नहीं है। कल से दिखा रहा हो, कोई मैजिक नहीं है। क्लियर? कोई मैजिक नहीं है। Once it breaks above this level, next only level जहां पे रुकना चाहिए। Guess. Let's have a guess. Who will guess?
Once it crosses this level, where will it stop? Super cool cricket. We have a 30-point rally here to work for. If it doesn't go up and it starts breaking down, then we know what is going to happen. Put it here, it will get your target. Then you have almost 750 to look at. Missions. Yes, Zydus should go up according to. Let's see. Where is Nifty heading? तीन दिन में एक ट्रेड लिया. मत करो. करने दो. अरे वो ऊपर ही जाएगा लगता है पैसा नहीं मिलता है. यही तो प्रॉब्लम है. लगता है मैं पैसा नहीं मिलता. लगता है वाला सिचुएशन रखना नहीं है. चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट बोल रहा है मैं अभी भी अनश्योर हूं. ये 5 मिनट चार्ट पे. यू विल ओनली गो बाय 5 मिनट चार्ट क्योंकि आप मिक्स करोगे इनिशियली बिगिनिंग में आपको कंफ्यूजन होगा. अभी तक तो चार्ट इटसेल्फ इज नॉट श्योर मैं क्या करूंगा. अब इसको सोचो. नाउ थिंक डीपर. अब मान लो ये सब एक ही बार है. इस बार का क्लोज किधर आ रहा है? ये हाई है, ये लो है. ये जो क्लोजिंग है वही इसका क्लोज है. इसका क्लोज किधर आ रहा है? एक्चुअली निफ्टी का डेली बार है. अभी आप मेजर करोगे ये 62% होना चाहिए ऊपर से नीचे. हो गया. हमारा सिस्टम कैसे 38.2% से थोड़ा ऊपर है बोल रहा है. तो आपका 38% इधर चलता है. दिस इज अबाउट 40%.
हो गया है 62%। रिवर्स देखो तो आप एग्जैक्ट 38.2% लगाओगे, अरे ऊपर आ गया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। बट चार्ट जो बोल रहा है वो सुनना बेटर है कि अपना एक रूल बना लिया है फिबोनाची वाला 38%। इज दैट बेटर? ऑलवेज द चार्ट इज टेलिंग यू व्हाट इट्स मेजरमेंट्स आर। ये बैटल कौन जीत रहा है? That will give you the answer where it is heading. के बाद भी चैट पे देखो, बोलता है माई व्यू इज आई पर आई वांट आई दिस। इसमें हम लोग एक लैंग्वेज यूज, we cannot use it on YouTube. It is a public forum. Who are you? Who cares what you prefer? That is what we used to say. If anybody uses those, हो कौन भाई? Now, if you want to take a risky trade, God no. पर जब भी जाएगा क्यों ये है कि यहाँ ये स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड ले सकते। आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि टारगेट इधर ही है। स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड जब नहीं रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत पास में है, तो नहीं लेना। वेट फॉर अ बेटर एंट्री। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड शुड बी लोअर। रिस्क टू रिवॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। 5 से 10 पॉइंट दे, ज्यादा नहीं देना है। वेट कर, वेट करेंगे मिलेगा। अगर ये बार है इस और ये और एक बार है, तो अब नेक्स्ट वॉर कौन जीत रहा है, नेक्स्ट बैटल कौन जीत, ये समझो। ये बैटल कौन जीत रहा है अभी तक? अब जाएगा इधर तक। ऐसा सोचने लगोगे तो चार्ट आपको बोलने लगेगा कौन जीत, कौन क्या कर। यहां से जो बेचना चालू किया बेयर से, यहाँ आके थक गए, वापस चालू हो गए। लार्जर ट्रेंड तो पहले से अप ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलने लगा चार्ट। तो भी बोलने लगे, दे रहने का।
actions. बैंक निफ्टी क्या कर Thank you, Tejas. You can help me by sharing, like, and subscribe. And if you follow every day, I'll show you when I will catch the top, the current daily chart pe. The current daily chart is going to put in a top somewhere. Wherever it is going to put a top, we'll catch the top. Not only we will catch the top, we will trade it all the way down and then get ready to be surprised on where the target will be for the bottom. We are in for some major action which is going to happen. This major action is happening because market is ending a 12-year cycle here. This cycle this time has been a little longer. इस बार ये साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक का साइकिल. तो ये साइकिल जब भी खत्म होगा तभी इसको पकड़ेंगे. बहुत मस्त ट्रेड मिलेगा. वो ट्रेड कर इतना बड़ा जब भी देखते हैं तो कभी भी इसको लॉग स्केल कर. ये वाला जो साइकिल है ये साइकिल खत्म हो रहा है. साइकिल इज very dangerous. Be very cautious. Don't get trapped by public words. Don't get trapped by media. Whatever people are saying. Market में कुछ और ही हो रहा है इधर. When it will crash? बहुत जल्दी है सबको यार. It will not crash as long as you are expecting it to crash.
सबको क्रैश दिख रहा है ना, तो क्रैश नहीं आएगा इतना ऐसा। पर नाम नहीं लेते, पर बहुत लोग हैं जो बेरिश बेरिश बोलते हैं, बहुत लोग हैं जो एक्सट्रीमली बुलिश बोलते हैं। मेरा पॉइंट यही रहता है, बहुत सिंपल। एज ए ट्रेडर, 1 साल बाद में निफ्टी क्या करेगा वो लेके आज क्या कर लोगे, कोई फायदा नहीं। 2 साल बाद में क्या निफ्टी होगा वो लेके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपको तो हर सेकंड, हर मिनट, हर पल जीना है। रोज सुबह उठ के मार्केट देखना है, रोज सुबह उठ के मार्केट क्या कर रहा है सोचना है। तो 2 साल का व्यू, 1 साल का व्यू, 6 महीने का व्यू, क्या फर्क पड़ने वाला है। यू हैव टू थिंक अबाउट, कैन यू गो फ्रॉम 19,000 to 12,000 in 2 days? नॉट पॉसिबल, नो। वो सर्किट लग जाएगा बीच में। तो उतना सोच के फायदा क्या है। आपको आज का, अभी का सोचना है पहले। कैन यू होल्ड अ पोजीशन फॉर द नेक्स्ट 6 months? नो, यू कैन नॉट होल्ड अ पोजीशन, यू कैन नॉट होल्ड अ फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 6 months। कोई बोलता है हाँ सर मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक बार सक्सेस में कितने बार फेलियर हुआ वो कोई नहीं पूछता है। तो व्हेन सी वेरी सिंपल, यहां इधर आके सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। हाँ बराबर है, चार्ट भी है, पैटर्न भी ऐसा ही लग रहा है, बराबर है, ठीक है। अगर सब ने एक्सपेक्ट किया पैटर्न कोलैप्स हो जाएगा, सब शॉर्ट करके बैठे, तो अब आगे बेचने वाला कौन बचा? अभी सोचा आगे बेचने वाला कौन बचा? कोई नहीं बचा। तो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सेलिंग चाहिए ना, कहां से आएगा सेलिंग? जिसको बेचना है वो सब ने टॉप पे बेचा, तो नीचे तक जाने के लिए बेचेगा कौन? इधर कोई बेचने वाला बचा ही नहीं। अब बेचने वाला बचा नहीं है तो बचे कौन? थिंक, ऊपर में बेचने वाला बचा नहीं है तो बचे कौन मार्केट में करने वाले ट्रेड? सोचा, nobody is giving me an answer। अगर सब ने इधर बेच के बैठ गए तो और बेचने वाला नहीं है तो मार्केट में बचा कौन? खरीदने वाले, बराबर। अब खरीदने वाले अपना एक्शन किया तो क्या होगा? सिंपल। तो यहां पे क्या हुआ था? खरीदने वाले बचे थे, बेचने वाला बचा ही देता। सबको लग रहा था मार्केट 15,200 हो जाएगा, 16,800 पे। तो हुआ नहीं हुआ ना। अब बेचने वाले क्या किया? थोड़ा ऊपर आके नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर आके नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर, वो थोड़ा ऊपर 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 करते ऑल टाइम हाई लगा दिया। एग्जैक्टली। सो आपको यह सोचना है कि once you start thinking like that, that is when you will actually make money. Who is left? यहां पे भेड़ चाल नहीं चलता है, सिर्फ भेड़ चाल सिर्फ वेव 3 में चलता है। और वेव 3 कहां था अपना? इंडिया का वेव 3। भेड़ चाल वाला वेव 3 तो इधर ही खत्म हो गया। ये वेव 3 है। ये वेव 3 में भेड़ चाल जब भी चल रहा था, ये सब एक ही डायरेक्शन चल रहा था। अब यहां आके भेड़ चाल नहीं चलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू फॉलो द ग्रुप और व्हेन नॉट टू फॉलो द ग्रुप। दिस इज नॉट द टाइम टू फॉलो द ग्रुप, दिस इज द टाइम टू थिंक कॉन्ट्ररी।
This is the time to follow the group. ये सब अगर elite wave सीखोगे तो समझ में आएगा. When do I need to follow what everyone is saying? When should I not follow? When should I pay attention to momentum? वो क्या बोलते हैं, sentiment indicator, this and that, and when to not follow the sentiment indicator. The problem, what happens is 90% of the analysts, I will say 99% of the analysts, वो एक सीख कर आते हैं सेंटिमेंट इंडिकेटर या नहीं तो कुछ और. सेंटिमेंट इंडिकेटर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इधर सेंटिमेंट इंडिकेटर फॉलो करोगे मुंह के बल गिरोगे. अब यहां से यहां तक सेंटिमेंट इंडिकेटर नहीं चला, अरे ये सेंटिमेंट इंडिकेटर नहीं चलता है, चलो मैं दूसरा कुछ लगाता हूं. अब यहां पे उसके अगेंस्ट जाना है और यहाँ पे जब मेन जाना है, यहाँ पे लॉस हुआ तो इधर आके सब वही करने लगते हैं. इसको छोड़ दिया, जो यहाँ चलने वाला है उसको यहाँ छोड़ दिया, और जो यहाँ नहीं चलने वाला है उसको यहाँ फॉलो किया, इधर आके उसको छोड़ दिया. दिस इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर. सो मोर अटेंशन हैज टू बी पेड टू बिहेवियर. एंड ऑल्सो the phase of the market. This is classic. अगर आप देखो, this is the trending phase of the market. This is the sideways phase of the market. तो यहां पे क्या यूज करना है, यहां पे क्या यूज करना है, अलग यूज करना है. इवन ऑसिलेटर का यहां पे बिहेवियर अलग रहता है, यहां पे बिहेवियर अलग रहता है. Without understanding deep, most people make this mistake. Now see, there was this fake trade here. इधर stop loss लगा के इधर buy कर रहा था, बहुत दूर है, नहीं चल रहा है, रुला रहा है. Now what is happening? It is still stuck in this range, blue bar range. आगे बढ़ा, नहीं बढ़ रहा है. यहां से अगर देना चालू किया तो ये यहां तक चला जाएगा. जो इधर फॉल्स ब्रेकडाउन वाले ब्रेक किया वो इधर आके फंस गए. इधर 99% ऑफ देम विल गेट क्लियर ऑफ देयर पोजीशन. नाउ वी विल सी इफ इट ब्रेक्स डाउन, वी विल गेट अ क्लासिक एंट्री, बट वी डोंट हैव एन एंट्री बिकॉज द स्टॉप विल बी टू फार अवे. कप एंड हैंडल नहीं बनता है भाई, ऐसा कप एंड हैंडल नहीं बनता है. Because I'm talking and also sharing, the number of trades that are being taken have become limited. But once you understand all of this, then you will be able to trade on all the stocks using the same principles. Nifty weekly is not a cup and handle. How is it cup and handle? तो कप एंड हैंडल बोलोगे, मुंह के बल गिरोगे इधर. वेरी डेंजरस पैटर्न. दिस इज अ क्लासिक ED, ending diagonal. Such situation has happened earlier also. Here is a classic ending diagonal. I have shown this yesterday. Look at the recording, past recording. Applies this in depth. The small battles are
Not even taking Nifty 2 bars low. This is the previous low. Will we get this trade or will we go above this? Very soon we will come to know. Now what happens? This will become our stop loss if it breaks above, because this is the low. So we can, if it breaks above this, we can easily get a nice trade here. One. This will be our this will be a stop loss here, 18,819. If it breaks above this, and we will start posting this here. So this will be our target. Wait, when it comes, I will show you. If it comes. Here is a trade I will take. Here the stop loss was too far away. 20 points. I am happy with 10 points. 12 points. देखो देना ही नहीं है मार्केट को पैसा. Market is always ready to take money from you. So be very clear on how much money you want to give the market. Ticker A.
Oh my God. Huh. What Bank Nifty is doing, what Zydus Life is doing. What Reliance is doing. यार वो जो पीडी लाइट भी आएगा कहीं ना कहीं आके घूम अप साइड में. Why will it go up? I don't know, but it will go up. मार्क दिस, कल परसों ये निकलेगा. बाय एंड ऑफ द वीक मारुति शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बाय. कहां तक जाएगा? 9400 है, 9800 दिखा देगा. वेटिंग फॉर निफ्टी टू क्रॉस अप. ओह, क्वेश्चन बोलता है ओएनजीसी. क्या लग रहा है ओएनजीसी क्या करना चाहिए? डे क्या करना चाहिए? लॉन्गर टर्म क्या करना चाहिए? शुड बी वेरी क्लियर. ये कल का अपना MFSL हो गया, ये खत्म आज तो इसका स्टोरी.
LTFH, 20 financial holdings we had yesterday. क्लोज दिया था इधर, आज आ गया इधर, बाय एंड ऑफ द डे शायद और ऊपर जाएगा. यू कैन अप्लाई जो मेथड इधर निफ्टी पे लगा रहे थे, सेम मेथड आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो. Once people are confident, फिर उसके बाद भी मैं मेरा ट्रेडिंग करता जाऊँ. हेलो IRCTC क्या होगा? क्या कर रहा है? Longest correction in IRCT today. Of correct. हाँ? अब हर इस पे आते जाओ. Longest correction. इससे नीचे आता है और यहाँ से टर्न होता है तो buy at the low. I cannot give you any advice. आप क्या करोगे? प्लीज कंसल्ट योर ब्रोकर एडवाइजर. दिस इज नॉट एडवाइस. दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ आई एम ट्रेडिंग एंड वॉट एवर ट्रेड्स आई एम टेकिंग. अदो नो, डिड नॉट ब्रेक अप. Even though my view here was bullish, I'm not taking any trade because it has not given me a price above the high of this bar. It's still stuck between this range. Width of the blue line. Sorry, cannot see the chart once again. Nifty is still not giving a high, just not going above this point. It's still stuck in this range. Not got a trade at all. Just waiting. भगवान प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड अपसाइड चार्ट बोलेगा ना बॉस, जल्दी क्यों?
जल्दी क्या करना है? लेट द चार्ट टेल व्हाट इट इज डूइंग. इट कैन नॉट कीप गोइंग साइडवेज फॉर एवर. कहीं ना कहीं बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूं. तो बोलेगा तभी देखेंगे. मेरे को कितना टाइम लगा था ट्रेडिंग सीखने में. ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं है कब ट्रेडिंग सीखा. बहुत लंबा स्टोरी है. इट वाज लाइक, हाउ टू एक्सप्लेन. किसी के लिए हाथ से चार्ट बनाते थे. चार्ट बनाते गए. कोई ब्रोकर था, ब्रोकर के लिए चार्ट बनाते थे. 1980s में सॉफ्टवेयर नहीं होता था, तो चार्ट हाथ से बनाना पड़ा. तो A4 साइज भी नहीं उस टाइम पे होता था. फुल स्केप पेपर का ग्राफ शीट लाके एक के पीछे एक सेलो टेप से चिपका के ये बड़ा चार्ट बनता था. चार्ट तो पूरा रूम भर जाता था. एक चार्ट खोलो तो रूम भर जाता था. और रोज उस पे एक लाइन डालते थे. वो करते 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 कब टेक्निकल एनालिसिस सीख गए पता ही नहीं चला. तो उस टाइम में जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होता है, जो मूविंग एवरेज होता है, वो रोज हाथ से कैलकुलेट करने का, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेल भी नहीं था. एक्सेल तभी इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर्स 384 में. हार्डली एनी कंप्यूटर्स देयर. कंप्यूटर यूज्ड टू बी सो एक्सपेंसिव. चांस ही नहीं था कंप्यूटर रहने का. तो सब कैलकुलेट करते थे. 10 डेज मूविंग एवरेज मतलब लास्ट 10 डेज का क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करो, उसका मूविंग एवरेज कैलकुलेटर लेके करो. एक भी गलती करते हो तो फिर से चार्ट बनाना पड़ता था. तो एक भी गलती नहीं कर सकते तो चेकिंग रीचेकिंग. एक चार्ट बनाने में तो पूरे दिन में तो 10 चार्ट बनते थे. पर उस टाइम पे एडवांटेज ये था कि किसी के पास ये सारा इंफॉर्मेशन होता नहीं था. तो परफेक्ट 10 डे मूविंग एवरेज मतलब 10 डे मूविंग एवरेज टच करके मार्केट चलता था. 20 डे मूविंग एवरेज करके 20 डे मूविंग एवरेज पे चलता था. फिर आए दूसरे ये वो ऐसा वैसा सब कुछ. अब सीखा पता ही नहीं. हाँ, उस टाइम पे यूएस से बुक्स मंगाते थे बड़े लोग, तो उसके जेरोक्स कॉपी लेते थे. हम पूरा जेरोक्स वाले शॉप पे जाके पूरा बुक का जेरोक्स कॉपी लेते थे. Those were easier times to trade. दो उस टाइम एक्सपेंसेस ज्यादा थे, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा था. ब्रोकरेज यूज्ड टू बी एनीवेयर बिटवीन 1% to 1.5%. 100 रुपए का शेयर खरीदो तो 1.5 रुपया, कल भी बता रहा था, 1.5 रुपया बाय में 1.5 रुपया सेल में जाता था. It was a different, completely different time. ये देखो वापस आ रहा है, आएगा. Has made this high 18
835.95, 836 अगर लगाएगा तो कैन गो लॉन्ग. Keep a stop loss here. 18,820, 15-16 पॉइंट. करना आएगा लगता है याद देते हैं. अम्मा अम्मा निफ्टी ले लेना. चलो अब हम लगाए इसको इधर. ये लो, ये स्टॉप, ये टारगेट, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ये फिलहाल तो ये स्टॉप. जैसे ये इस लेवल के ऊपर जाता है उसके बाद में ट्रेलिंग चालू. मतलब ये इस लेवल से ऊपर जाता है, 850 के ऊपर जाता है, फिर ट्रेलिंग चालू. दैट्स माय ट्रेड. कल तो मेरा स्टॉप इधर है. I am old school. Yes, I don't want to punch on the system myself. वो जिसका काम है उसको करना. Don't tends to here this point
that we will start filling up. मस्त है कि नहीं बाद में ही पता चलता है, जब भी हुआ तभी को थोड़ी पता चलता है मस्त है कि नहीं ट्रेड, तो कोई गारंटी नहीं रहता है। assumption पे ही yesterday we had Hiro Motoko. So given EST. देखो हीरो मोटोको क्या कर everything is fixed. Shrikant, everything don't change every time. Trading has to be, everything is decided in advance. It is only when the chart says yes, we press the trigger, that's it. Monday bar what? बार में कोई क्लैरिटी बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस दिखा रहा है अभी तो। ओपन क्लोज सब एक ही लेवल पे खड़ा है अभी। इंटरेस्टिंग चीज देखा, ये जो ब्लू लाइट है ऑन करके पे लगाओ, हल्के लास्ट बार आज का लो take this top, high is also at that point, so the swing was
2 times this correction from this as the high as this. ये सब धीरे धीरे आगे आगे चलते हैं, तभी दिखाते रहता और how to gauge where when it turns here it will come here, how to धीरे धीरे सब एक साथ में बहुत कंफ्यूजन होगा. There's no price to bar conversion fixed. No, see here price to bar changes, doesn't make a difference as long as this value comes from a previous correction on the Nifty which was measured and found to sustain every time. Kept it. That's it. So there are times when you feel risky, then it comes here and then bounces. Take a trade, get out immediately. So those are pure scalping trades which I'm not getting into. For that, you'll need a concentration. Hey, Shashikant, I'm not ready to get into all that discussion about volume. It'll get too complex. Keep it simple on the day trading part. All those volume learning and all is slightly difficult. What was this? This is the octave working. What is this? Double the length of this one is the length of the red line. I'll talk about it later. Position है तो उसको follow. Right now, my stop loss is here. So, when will I start trailing? Only when the market goes above this point. Otherwise, I cannot trail. No, this is the maximum correction length I am expecting once it starts moving. Because this is the point. So where am I expecting it to hit? Hit this level. 18,887. Around those levels. Let's see. 3 point. क्या देखते हैं. आपसे मिलना चाहिए. दो ही मेजरमेंट पे चल रहा है अभी तक. बहुत सारे लोग हैं ना भाई, एलिट वेव सिखाने वाले हैं, वहां सीख लो, सिखाएंगे आपको. 2, 3, 4, 5 कैसे काउंट करना, एबीसी कैसे काउंट कर देंगे. तो कॉम्प्लिकेट कर लो, जितना चाहिए उतना कॉम्प्लिकेट कर लो. हम तो सिंपल
अगर आपने स्पेसेस में, ट्विटर स्पेसेस में सुना होगा, मैं हर बार बोलता हूँ, मार्केट्स आर सिंपल, यू आर मेकिंग देम कॉम्प्लिकेटेड, डोंट मेक देम कॉम्प्लिकेटेड. काम धंधा नहीं है क्या आप स्टॉक? थैंक यू सो मच चिन्मय. कर रहा है. कुछ नहीं हुआ भाई साहब, क्या हुआ? जस्ट कैलकुलेटिंग कहां तक जा सकते. पर यार नहीं वही अब स्टॉक्स वाला एवरी डे 3 or 4 ब्रोकर सेंड मी एग्रीमेंट फॉर रॉयल पाइप. मेरे को सब ब्रोकर बनाना चाहते हैं. ये वो व्हाट डू दे कॉल इट, वर्ड है ना उसका, authorized representative, वो जो AR something they call it. They want to make me a broker. I say I'm not interested. फिर भी भेजते जाते हैं. फिलहाल तो नजर एकाग्रता से निफ्टी पे अटकी हुई है क्योंकि पोजीशन खड़ा है. My record of consistent trades without hitting a stop loss was 486 trades non-stop before पहला stop loss hit. देखते हैं इस बार YouTube पे कितने ट्रेड्स करूंगा without stop loss being hit. I hope I can do 500 this time. That हुआ that एटलीस्ट बुढ़ापे में कुछ याद रहेगा. हाँ
ऑथराइज पार्टनर फ्रेंचाइजी, हाँ मेरे को ऑथराइज पार्टनर बनाना। मैं क्या करूंगा ऑथराइज पार्टनर लेके? तुम्हारा ब्रोकरेज में शेयरिंग देंगे सर 70%। अरे यार ब्रोकरेज ही तो 0.003% चलता है। क्या करेंगे? कैपिटल ओनली 200% गेन, but I went from $100 million to $298 million. Yes, nice trick it was. 2007 to 2009. That was the best streak of mine. That all past. Let us do now again. This time. 500 trade. लगेगा 2 साल करते करते। कल एक प्रॉफिट पे क्लोज किया था, आज भी अभी 850 के ऊपर 54 के ऊपर जाते ही ट्रेलिंग चालू हो जाएगा। फिर बहुत जल्द अपना कुछ भी हो जाए नो लॉस नो प्रॉफिट वाले ट्रेड में आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट वाले ट्रेड पे आ जाएंगे। भाई तो बोल रहा हूँ भाई, और भाई चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, मैं तैयार चलो। Trading options I have not done. I have bought options on positional basis. Trading कभी नहीं किया, which is like buying for very short term, very for this one, 5 रुपए पे लिया 10 पे बेचा, ये काम कभी नहीं किया। There was one client for whom I remember was Curtis, for whom I told him to buy when in June 2008 डाउ चल रहा था कुछ 12,000 11,000। करी था सेकेंड इधर था June 08 in Los Angeles. So then I told him क्या करना चाहिए, 10,000 का पुट खरीद। बोले 2,000 पॉइंट नीचे है, नहीं 10,000 का पुट खरीद। कब का खरीदना है? दिसंबर 2008 का। There June he bought. When he bought, he got it for 25 cents. Then it was closed here. This day when the Dow came down, it hit 7,500. So it is not actually 1,000 puts, it is 1,200 puts. It is divided by 10 and then this complicated one bit. तो 25 सेंट में जो खरीदा था
25 cents was the buying price, sold for $47 here. The people who have been following me for more than 10 years know about all of this. This is the I gave this forecast. ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर you will have a mother of all. यार ना, one more rally on the Dow here should be end this pattern somewhere around here, 35,130. जब डाउ ऊपर जाएगा, टाइम पे निफ्टी नीचे जाना will happen. Once that happens, then after this year, बहुत time है. का टाइम है. तक अपन निफ्टी ट्रेड कर ले 50 पॉइंट 50 अड़े यार तो ना बोर हो गए यार. निफ्टी में हुआ था ना, आप लोग भूल जाते हो, निफ्टी हुआ था. लोग इसको बोलते कोरोना का फॉल, बट ये कोरोना का फॉल है ही नहीं. It's happened in January 2020. This is February 2020. March 2020. जो डाउ में जैसे फॉल हुआ था वैसे निफ्टी हुआ था ना. 12,000 का 6,000 आ गया था, 50%. So that is the अपने who is winning the battles? Those are Nick Kumar, those are all complicated questions.
for which you'll have to learn a lot more about the market than just to learn. Not possible. Of course, it is possible to find out which ones will double, which ones will do, but that is not possible by just following one or two principles, understanding just one or two, and try that. Just doesn't work. चलो देखो ये आ गया अपना लेवल, ब्लू लेवल के नीचे. अब एवरी बार पे जो हाई लगाता है वो हाईएस्ट पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा. जब यहां था लगा नहीं ना, यहां तक जाएगा, 850 तक जाएगा. There's so much information I put in the videos, but प्रॉब्लम क्या होता है, सब लोग को आजकल इतना आदत पड़ गया है, वो वीडियो को देखते हैं जैसे मूवी देख रहे हैं. एक बार वीडियो देख लिया और समझ गए. ऐसा नहीं होता है. There is so much information in that videos. अगर फॉलो करो, even the video on illusions of finance, 1 घंटे का वीडियो है, उस बराबर से देखो तो बहुत कुछ समझ में आता. तो all is people want to learn, start trading the market. ऐसा नहीं है किसी के पास दिमाग कम है, ये वाला प्रॉब्लम है ही नहीं है. Nobody is born smart. Albert Einstein, I am a fan of Albert Einstein, said one, every genius is 99% hard work and 1% inspiration. The problem is people are not consistent and they don't work consistently with thought. They only start doing whatever they catches their fancy. That's the 5 पॉइंट ऊपर. Good book to read, Technical Analysis, Murphy's book, Technical Analysis of Financial Markets, John Murphy. You'll find free PDF online any place. So I don't recommend you from the free PDF. You can buy the book from Amazon also. भूख लगी.
हाँ, वो चिन्मय परदेसी वो सब इधर नहीं बताऊं। वहां पे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, इधर नहीं लगाना चाहिए, दैट इज ऑल फॉर वेबिनार पार्टिसिपेंट। Those are slightly advanced stuff. Where to put, how to get the final end date, beginning date of a कुछ मेरे बच्चे कुछ स्पेशल बच्चे हैं जिन्होंने पैसा दिया मेरे को। इट इज अनफेयर टू देम इफ आई गिव एवरीथिंग ऑल ऑफ इट जस्ट लाइक दैट ऑन द पब्लिक फोरम। आपको भी बुरा लगेगा। बहुत लोग करते हैं, डिस्काउंट देता हूं, एक को इतना डिस्काउंट दिया, दूसरे को कम दिया, फिर दोनों, फिर लगेगा यार मेरे को तो बेवकूफ। It is all more than welcome if that is unfair. Last year, I think Samir should be here. Samir, if he, there are quite a few audience have attended. They paid 1,88,000 rupees. अटेंड अ वर्कशॉप। अब उनको जो सिखाया इधर ओपन में सबको बांटेंगे, तो वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही फ्रेंड है, तो भी तो बुरा लगेगा। ये क्या तरीका हुआ? अभी तो कोई वेबिनार नहीं है, कोई वेबिनार करने का मूड। ट्रिगर कम हुए।
ना करके आया, निफ्टी वहीं खड़ा है. हाँ. I put up in Bombay, Tarun Verma. Most welcome anytime you are in Bombay. Oh.
इतनी देर में कुछ नहीं किया? नहीं भाई, आधा घंटा एक ही लेवल। ये तो बहुत परेशान कर रहा है। Yeah, I just had my lunch. It was gone for more than 25 minutes. 5 bars, 25 minutes. कुछ नहीं किया निफ्टी ने। मैं कहाँ वहीं खड़ा है। ऐसे थोड़ी चलता है। होगा when the market is caught in a dull action for a long period of time, वहां से जो नेक्स्ट एक्शन आता है वो वाइल्ड आता है, एक ही डायरेक्शन में आता है। बी रेडी, वेट पेशेंटली फॉर इट, इट विल कम। पीपल से कई बार आपने सुना भी होगा, पीपल से अरे क्या बोरिंग मार्केट है, कुछ कर नहीं रहा है। ये तो बहुत मजा आता है ऐसे मार्केट, क्योंकि वहीं पे पूरी तैयारी होती है मार्केट की नेक्स्ट बड़ा मूव के लिए। Patel, I don't do a webinar regularly, only when I feel in the mood. अभी तो लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट किया, महीना 2 महीना तो ये डेली देखते के बाद सोचते क्या, अभी तो नॉट प्लानिंग एनीथिंग। ये जो लाइव ट्रेडिंग हो रहा है इज एज गुड एज ए वेबिनार ओनली, नो शेयरिंग सो मेनी थिंग कंटिन्यूअसली। आप लोग ध्यान रख पाए इनकम। हम ये सब सोच रहे फिन निफ्टी कहां से कहां पहुंच गया। 1055 को निफ्टी लो था, फिर निफ्टी कुछ हाई भी तोड़ दिया। सॉरी 1055 इधर निफ्टी था, हाई पे आ गया और ऊपर भी जाने तैयार है। को पहुंचा दो 18,900 इधर, फॉर द वीकेंड 1900 लगा देगा, कुछ तो जाएगा। You see, Bank Nifty has also come up till the high. He alone is sulking.
is around here. Go up. Time. Oof. I'm curious, स्ट्रीम पे एड्स किसके चल रहे हैं? सारे ट्रेनर होंगे. अरे बाप रे. Painful rally. बेचने दो यार, क्या करे. हर आदमी अपना अपना पेट भरने का कोशिश करता है. हाँ, जब भी मैं देखता हूँ YouTube, मेरे को भी वही मिलते हैं. ट्रेनर के ऐड. अब पिछले दो तीन दिन से आई एम लुकिंग एट वीडियो एडिटिंग एंड OBS वाला सेटिंग्स एंड अदर थिंग्स. अभी सब वो OBS कैसा सेट करने का, यूट्यूबर कैसा बनने का, वो ऐड आ रहा है. पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है. It's quite funny how you get these kind of ads without even trying to do. Very, very funny.
strange. Why is this not ducking at all? Now it is ducking. There was some problem. Holy moly. सो जाए. आरती इंडस्ट्रीज. क्या हो गया आज? ये अपने मूड में धुन में चले जा रहा है. गोइंग अप. Wow. ये सेक्टर मत पूछना यार. ये सेक्टर के बेसिस पे आई डोंट लुक एट द मार्केट. मार्केट इज ऑलवेज इंडिविजुअल स्टॉक. हर एक अपने हिसाब से ही चलता है. कोई फुल सेक्टर देख के आप ये ऐसा होगा वैसा होगा मत करो, बिकॉज इट ओनली कंफ्यूज यू. फिर आप बोलोगे इस सेक्टर में मैंने ये खरीदा था, वो एक ही नहीं चला, बाकी सब चले. डोंट लुक एट इट एज ए सेक्टर. निफ्टी, वी लुक एट निफ्टी बिकॉज निफ्टी इज ट्रेडेड, एंड जो ट्रेड किया हुआ है उसका चार्ट अलग ही बनता है. एंड फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आईटी देख रहे हो या मेटल देख रहे हो तो वेदांता अलग चलेगा, हिंडाल्को अलग चलेगा, टाटा स्टील अलग चल सकता है. जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे चले. डोंट लुक एट इट एज ए सेक्टर, लुक एट इंडिविजुअल वंस. commodity cycle. See, normally cycle is first equity will top off, second commodity will top off, third interest rate will top off. That is the cycle. But एक बात समझो, because of the internet age, a lot of things have started changing. आज किसी को भी पूछो मूविंग एवरेज किधर है, पता है उसको. किसी को पूछो मार्केट में पीई कितना है, पता है. तो अब सबको पता है, तो एवरीवन इज लुकिंग एट द सेम डेटा. व्हेन एवरीवन इज लुकिंग एट द सेम डेटा, सबका एक्शन एक जैसा हो रहा है. जब सबका एक्शन एक जैसा होता है तो मार्केट इज स्क्यूड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. When market is skewed in one particular direction, it will never unfold in that direction. Excuse me.
अल्लाह, ये स्ट्रीमिंग के चक्कर में 1.5 लाख रुपया उड़ गया अभी। क्या मयूर भाई, कहाँ फंसा दिया मेरे को? So the question here is, does it mean tail end risk has increased in the market? Yes and no. The market is still working to as it has to work. What has happened, changed, is the patterns have become a lot more complicated. पहले जैसे simple नहीं था. If you go back way back in 88 and even as late as 2020 also, the patterns were not so complicated. Abhi aake patterns have become extremely complicated because everybody is expressing an opinion there. So that opinion is making a big change in the way the market unfolds. So whenever that is why you see these days markets are extremely volatile. एक दिन एकदम ऊपर जाता है, एक दिन एकदम नीचे आता है. People blame it on the algos and HFT trading. ऐसा नहीं है. 1.5 लाख कैसे उड़ा? तो कल से आज में 1.5 लाख उड़ा भाई साहब. इसके to start streaming in 4K, I had to put in a new graphics card, a NVIDIA graphics card, which cost me about 68,000. चलो सुन लो, ठीक है. तो and 4K streaming करने के लिए so that quality improve होवे, bright image मिले, the RAM was increased to 128 GB. That cost 30,000 rupees. ये ग्राफिक कार्ड और रैम डाला तो उसके साथ में प्रोसेसर एनीवे कोर i9 was very high end, but to do that processing I had to get a M2 hard drive. A 2 GB M2 hard drive cost me 20,000 rupees. ठीक है, हो गए 1.25 लाख हो गए. और उसके बाद में अभी the webcam which I am using right now is a normal 720p. So I'm getting a 4K webcam that costs 20,000. पूछो मत, क्वालिटी आउटपुट करने के लिए क्वालिटी पैसा जाता है, एफर्ट भी लगता है. एफर्ट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट. You have to do other things also. Now if you actually want to see my setup, very few people have seen my setup at the moment. Let me show you. Is क्या तो कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएगा? अच्छा चलो एक इमेज डाल देते हैं. RTX 3080 नहीं, उसके ऊपर वाला कुछ दिया है उसने. I don't know much.
Can you see? These are the monitors from which I'm working, beaming to you right now. These are 6 4K monitors. इतना मॉनिटर को ड्राइव करने के लिए मेरे रैम भी चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो and streaming at 60 frames per second. That's a whole lot. फाइनली निकलो भाई, ऊपर चलो. अब ये स्टॉप लॉस आ गया इधर ट्रेल होने के लिए. हाई बनाया, जैसे जैसे नया हाई बनाते जाता है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल होता जाए. Oh, I have a lot more things planned. Just as my scanner, the stocks are being scanned, I want to run a ticker of option Greeks so that we are able to keep track of what is happening for the option traders also. Then I plan to do a very deep options webinar. I will do it only one time. Whoever wants to attend can attend. And show how to actually use the Greeks to understand the market movement. Then once you combine it with this pattern understanding, you tend to make a ton more money than you could do. There must be, when I said market is going up, there must be several who went and bought 18,900, 19,000 calls. The point is never to buy such out of the money calls. It is always to buy at the money calls. Why? There are reasons for that. They are expensive, but they're expensive for a reason. So I hope I'll be able to explain to everyone all of that. People will be willing and want to take advantage of knowledge rather than just looking at trades. सिर्फ ट्रेड तो बहुत लोग करते हैं. जब भी प्लान करके अच्छे से ट्रेड जाता है अकॉर्डिंग टू इट, and once you buy a price, that buy price is never seen, stop is not hit. That is the beauty of trading without any stress. जल्दी क्या है ट्रेड करने? It's always been my point. जल्दी क्या है ट्रेड करने का? Deep in the money भी नहीं खरीदने का मालिक. This I learned from one of the best traders in the world, one of the most successful traders of the current time. He told me, why are you doing this stupidity? सबके जैसा मैं भी वही करता था. अरे सस्ता है ना, वो बेटर है, ज्यादा रिटर्न मिलेगा. नहीं, ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, वो ज्यादा पैसा ले जाता है आपसे. लगता है ज्यादा रिटर्न मिले. Then he explained the reason why at the money call or one strike below is the right price to buy if you're going long. At the money put or one strike above is the right one if you're looking to trade the market. Here, if you had bought a 18,800 call when the market went up, you would be making more money here compared to any other call.
हाँ, यू आर मिलियनेयर चिप्स का पैकेट बच्चों के लिए खर्च हो गया तो चलता है सर, और प्रेयर सर विथ यू। प्रेयर्स तो ठीक है, क्या करने क्या वाले हो ये तो बोलो। What was my job in the initial days? My first job, I used to get 100 rupees a month as a salary. मेरा काम था चार्ट बनाना। चार्ट बनाते थे सुबह से शाम तक, चार्ट बनाते। अब पूछते थे क्या पागल पर, because in those days trading was treated like जुआ। एंट्री इधर था, स्टॉप लॉस अभी इधर आ गया, बच्चे 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 6 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो फ्री ट्रेड हो जाएगा। ERP, Murphy's book. Have you understood Murphy's book to even go to another book? Holy moly. Oh. कल बताया था ना, इंडसइंड बैंक।
If you have not studied Murphy's book at least about 10 to 15 times and have not applied everything that he says and discovered it for you, then you are missing a lot from Murphy's book. See, many people read about the Dow theory. Even Murphy has written so much, 30 or 20, 30 odd pages about the Dow theory in his book. But how many have truly understood what the Dow theory is about? You've not really understood, because if you understand the Dow theory, then all these questions of divergences and higher highs, higher lows, all those will get cleared. Not the time and place to go into all the details, but everything that you study in technical analysis, including options, is all there. The basic reason, cause, effect, how to interpret, is everything is there in the Dow theory. What people have done is taken the Dow theory, applied it in different ways, created different instrument indicators and oscillators and systems, and they have sold it. It's all old wine in new bottles. Take, for example, the stochastic and Barry Williams percentage R. They are exactly the same, but what he did was, one calculates from the low, one calculates from the high. So, and then he just labeled it percentage R and sold it as a new indicator. There's absolutely no difference. So if you know one thoroughly, you will find that everything else is also talking more or less the same thing. None of them give you any great edge one over the other. One itself is more than enough. सत क्या है? सत अपना ये है कि एक के बाद एक now that it has consistently maintained here, the speed should increase. Without the increase in speed, this will not be able to maintain its consistent higher. नहीं है सब में वही क्वेश्चन मत पूछो आशीष, इट कॉम्प्लिकेटेड है ये आज आग लगा। वही यूएस देखो जहां पे दिमाग नहीं, दिल से ट्रेड करते हैं। यहाँ इंडिया जितना भाषण देने वाले नहीं मिलेंगे, यहाँ इंडिया जितने ज्ञानी लोग नहीं मिलेंगे, वहां पे पैटर्न्स बहुत सिंपल है और क्लियर है। Look at the euro, look at FTSE, look at there, the patterns are very, very clear. Nifty, India is one of the most difficult markets to trade. हेलो, अभी स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर आ गया। अब जाएंगे 3 पॉइंट।
Dollar will become very strong. That is my view. Rupee will go up to 9. चलो तैयार चलो. Many people trying to fight the market. ये देखो हिंदुस्तान लीवर क्या करेगा. देखते ही बोलना चाहिए क्या करेगा. आप ट्रेड करो ना. आपको किसने रोका है. कूल क्रिकेट. आप ट्रेड करो ना सिर्फ कमोडिटी. स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है. जिन्हें आपका हाथ पैर बांध के बोला नहीं आप कमोडिटीज ट्रेड नहीं कर सकते हो, सिर्फ निफ्टी ट्रेड करना है. आज का ट्रिगर ट्रेड, today's trigger trade is working because Nifty is also working along with it. This was triggered at 524, has come to 502% gain from the trigger point.
What do you understand? Sorry, don't feel offended. What do you understand of divergence? If you can explain. What do you understand of divergence? Can you explain? Where is the divergence on weekly? Mr. Prakash? Where is the divergence? Where? RSI? तो RSI लगा देते हैं आप. क्या किया? Where is the divergence? अच्छा अभी क्वार्टरली चार्ट में जाए. चलो क्वार्टरली में जाते हैं. Where is the divergence? Sorry. Oh sorry. क्वार्टरली में चले जाए आपके लिए. Where is the divergence? टॉप ट्रिगर कराएगा निफ्टी. टॉप ट्रिगर कराएगा तो टॉप पे तेरा. My DM is always open. But truly speaking, you don't understand what is really divergence. I suggest you study what is divergence before coming down and making a assumption that there is a divergence. There is no divergence on RSI or Nifty, Bank Nifty. Book पढ़ो. What exactly is divergence? When do you say there is a divergence? How do you qualify the divergence? What is a classic divergence and what is not a classic divergence? What is an illogical signal? Those are the ones which will tell you what is happening.
You hit my stop? Possible? 3 पॉइंट खा गया. Welcome, welcome. I am here to show you to see. Whether you see or not, that is your choice. $224. So wisecracks will not give us anything to trade. हे भगवान कृपा निधान. करना है करो ना भाई. पका रहे हो. This is painful price move.
कल मार्केट कितना आज लग रहा था, आज सडनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज डेड. Thought it is a part of, it's a part of the game. Yes, correct. डेड लग रहा था ना, नहीं लग रहा है. परसों डेड लग रहा था जब सब नीचे आ रहे थे. कल मजा आया because it was matching with our view. Today it is matching with our view, but it is still not moving up. This is part of the game. Get used to it. That is why a trader's job is one of the most boring jobs in the world. अगर बराबर ट्रेड करते हो तो इससे बोरिंग और कुछ नहीं होगा. वेट करते रहो, आएगा 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 आएगा. तो इस चक्कर में बट कभी भी ये गलती मत करना कि आप एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करो. एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड मत करना. प्राइस एक्शन, मनी फ्लो, मोमेंटम आर सुप्रीम. अच्छा, मोमेंटम क्या मेजर करता है मालिक? What do you mean by momentum? चलो let's have this discussion. मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, मेरे को कोई समझाओ. What is the meaning of momentum? How do you measure momentum? आंसर है, हाउ डू यू मेजर मोमेंटम विदाउट लुकिंग एट द बुक? The market is not a place for you to find excitement. Price का velocity, तो हाँ, how do you measure it? How is it measured? Mechanism क्या है speed of rate rise and fall calculate करने का? That is the question. आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं अभी दिखाता हूं. Difference in close in a particular time frame. Okay. So what are you measuring? फिर वापस वही ADX plus RSI helps in measuring it. How? How? Mystic Wave, how? Everyone comes up with this answer. RSI है, ये है, price है, wallet. How? When price shift in range, no, that is not the right answer. Within the time period range where the price closed relative to that range. Okay, how? देख रहे हो, सब समझते हैं, अपने को पता है. एंड स्टेटमेंट आ जाता है, मोमेंटम इज सुप्रीम, ऑसिलेटर इज ओवरहीटेड. किसी ने स्टेटमेंट दिया इधर का, उसी को हाईलाइट कर रहा हूं. नॉट टू पुट एनीवन डाउन, बट लुक एट द अंडरस्टैंडिंग. प्राइस अबव 45 डिग्रीज, प्राइस बिलो 45 डिग्रीज, लो मोमेंटम. ये तो कहीं और पहुंच गए. मार्केट इज साइडवेज, SM इधर वेटिंग सम न्यूज और दे आर एक्यूमुलेट. लुक एट द आंसर्स. अगर आपको इंटरेस्ट हो सच में सीखने का, कुछ समझने का, तो ये चैट में देखना, कोई भी एक भी करेक्ट आंसर दिया अभी तक.
एक भी इतने लोग देखते हैं, हर आदमी यही बात करता है, जितने एनालिस्ट है यही बात करते हैं, बट करेक्ट आंसर, हाउ इज मोमेंटम मेजर्ड? सिंपल क्वेश्चन. Do you see where the problem is? The problem is because the fundamental understanding is not clear. Don't say we know nothing. Of course you know. You know quite a lot. It's only thing that you have not thought about it. लग गया स्टॉप लॉस मेरा? नहीं लगा अभी तक. लगेगा? लग गया. कट गया. साढ़े चार गए. Will we hit to was it what? Short? No, will not go short. Why? Momentum is price. If they rely on indicators, I will in this market only. Market went down to on Monday went up. ये सब बकवास है. 4.5 पॉइंट भैया, पेटी नहीं. 1000 निफ्टी ट्रेड किया तो 4,500 रुपया गया. No. Okay. Here's the answer. Momentum is measured by the current close compared to a price range of the previous last number of bars. Meaning, let us say if you are measuring momentum over 1 month, which is 20 trading sessions. तो 20 days का जब भी आप मोमेंट रेंज हाई एंड लो मेजर करते हो, उसके लो से या हाई से कहीं से भी कैलकुलेट करो, डजंट मेक अ डिफरेंस, इनवर्स आता है. क्लोज कितना दूर है? लेट अस से द क्लोज इज 20 पॉइंट्स अवे 14 लास्ट 20 पीरियड्स का. तो नेक्स्ट बार पे अगर प्राइस इज मोर देन 20 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस 14 बार्स, सो वो जो रेंज भी है एवरी बार पे पिछला रेंज जो कंपेयर करते हैं वो भी चेंज होता है. तो द नेक्स्ट बार में सपोज 20 पॉइंट्स का डिफरेंस था, अब हो गया 22. दैट इज काउंटेड. दिस इज अ बेसिक स्पीड. नेक्स्ट बार पे जब भी 20 और 22 का डिफरेंस इज 2, अगर वो 20 और 22 से एकदम 25 गया, that means it is picking up speed. Then 25 से अगर नेक्स्ट बार पे 26 आया तो वो स्पीड 1 पॉइंट से कम हुआ, बट डिफरेंस इज स्टिल देयर. It is still rising, but the difference from the close or the range is changing. So that is how you measure whether it is changing from bar to bar or increasing with every bar. That is called momentum. And how do you measure it? You come back to the close. So what is the most important point again? It is the close. And how is that calculated? And what does the stochastic do? But what does the stochastic do? It measures the close from the previous to 14 bars range. That is exactly what it is doing. That is exactly how momentum is calculated. Without understanding this, just writing off momentum is supreme, oscillators can be overheated. How can it be? You are saying a bat can be used, in cricket, a bat can be used to hit the ball. But bat is not supreme. अरे ऐसा कैसा हो सकता है? You are saying one thing is supreme and your next part of the statement you cannot say the same thing is of useless, can be get overheated. You have to understand not only the definition, how it is calculated.
you keep that calculation properly, it will work. So everything that you see, ultimately you are calculating the same bloody thing in 100 different ways. Yeah, I am going for the definition calculation formula. When you understand the calculation formula, only then you can understand what it actually means. Otherwise, you don't understand it at all. Exactly. Everything comes from price. So the only thing the market will show you at all given points of time is open, high, low, close and volume. That's it. Market के पास और कुछ है नहीं दिखाने के लिए. बाकी सब आप इन्फर कर रहे हो ऐसा होगा. ऐसा होगा नहीं होगा. That is the guesswork that we are doing. When you study, you will realize that it is only pure conjecture and pure forecast of what has happened previously is likely to happen. Now on an intraday basis, my original stop loss was here. Now anybody would say, अरे stop loss को इधर ही रखना था, अभी ऊपर चला जाता, काश मैं इधर रखता. ऐसा नहीं होता है भाई. कल जैसे लगाए थे तो अगर बराबर रुकते तो आज सुबह इधर आके क्लोज होता. So today we just followed one system which we have made. That system triggered. Now because of that I lost 4 points. Big deal. But the day every time it gives, most of the time when it gives money, it gives huge amount of money. Now what I will do, I will again go back to the same bloody thing. Again put the same bloody thing. ये जैसे इधर से पकड़ा था, इसके ऊपर आया तो बाय करेंगे. We will see. I will take in one more trade. Oh goodness. I'm sorry for this noise. I'll have to go silent for a while. Somebody is drilling in the house above. Thank God. The curse of living in Mumbai. Have to live in apartments. कोई भी उठ के कुछ भी कर देता है. Pain. See what is happening here. When you check the momentum, this is calculating the close only of the last 14 bars, 13 bar, 40 last 14 bars. इस बार का हाई और लो किधर है? इधर है. इधर ये पिछले वाले, ये अगर लास्ट बार पकड़ोगे तो इस बार का हाई और लो, हाई इधर है, लो इधर है. लो के पास क्लोज आया, which is why the stochastic, the blue line was lowest. Now the range remains the same क्योंकि ऊपर high and low has become the same. This has moved further. Okay. So high and low तो अभी तक वो 14 bars का high and low वही है ना, hasn't changed, but the close has come up, which is why this is going up. There is no way that the indicator can overheat without the price showing or without there being momentum. Now this is the momentum. The close is here, it was at the lowest, then it went higher, then it went higher. अगर next bar पे it doesn't go higher, it comes closer, it comes lower, there will be a loss in the momentum. That is how you look at the momentum. So what happened? It went higher, it was high, went higher, then dropped. Then next पे फिर speed पकड़ा, बहुत ऊपर गया, फिर stop हुआ, फिर बहुत ऊपर गया. And once it reaches the extreme, then it will keep oscillating at the extreme, and then it will start losing the momentum. And then you start getting the lower closes. Once you get the lower close, it will reach the other end and then it will go up. Stop loss hit करवाया, हाँ करवाया, 4 पॉइंट गए ना, क्या करे? स्ट्रीक कब चालू होगा?
होगा तभी कहेगा ही नहीं. There will be calls again today. वीक हो गया, मार्केट ने टॉप लगा दिया, अब इसके ऊपर नहीं जाना है. पिछला हाई लगा दिया 8880 का, हाई ऑलरेडी आ गया. All these questions will come or points will be raised by people while drawing. See. It. Is there a higher high, higher low here? Disregard this spike. Still space for this one to go. It has. Having come this is more like a sideways pattern. Still go up. There is no way this is going down yet. Not yet. अभी downside trade करना ही नहीं है. This is still not the time to go for a downside trade. Still time to look for the upside only. Let's see if we will get any triggers today for tomorrow. आज का ट्रेड तो खत्म. Already 1446. Yesterday was so much fun. Today, not much fun. Maybe I will watch if it goes above this here. By close, then I will go buy and go for home with this position. This is just not a pattern that will take the market down. It's a pattern that will take the market up. That said, if you ask the question, stop loss क्यों किया? क्योंकि सिस्टम बोल रहा था स्टॉप लॉस करना है. कल आके फ्रेश कॉल लेते या उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाने के बाद में आगे चल के जो होता है वो कर. Let's see, there's still 45 minutes more. 43 minutes more. बहुत कुछ होता. This could just be a action to shake out the weak hands like me. छोटा ट्रेडर है ना, हम टर्न करने के लिए आता ही है. Expecting this decline? No, not at all. आ गया तो स्टॉप लॉस करना पड़ता है. $4.5 पेटी हम लॉस. $4.5 पेटी ही. हाँ, निफ्टी ट्रेड करो तो 4.5 पेटी जाएगा. निफ्टी अपना देखो ऊपर आता है तो देते हैं फिर से, घर लेके जाता हूं. 4.5 पॉइंट तो ऐसे इधर ही दे, आज ही देखे चला जाए. ऊपर आना चाहिए. लेट्स सी व्हाट इट डज.
did a little more than what we expect. This is the false thing that for me, it was a false. Happens. अरे वो 500 करोड़ अभी कहाँ है? गए. Come on. देखो चालू हो गया ट्विटर पे. Helicopter crash landed. All passengers safe. IDFC going to 68. Party over. Look at mid cap. $50 पे चालू हो गए. Oh, sorry. सॉरी, देखा नहीं. ट्रेड जो है, ट्रेड इज ऑलवेज just one more in the list. You're only looking at I am only looking at patterns and patterns. Nothing else. Up. This. Don't underestimate him. He's a veteran in the market. He's made all his money in the market. He has a lot of experience of reading the workstation, which is one of the most difficult skills. When you sit with him and trade, things are different. Things are very different when you sit with him and trade. Yes, he does not understand technicals, but that is not a crime by itself. His ability to read the trading workstation is far, far superior than 99% of the people I know. But sometimes market, when caught in a technical bounce, or when it is caught in a long-term bull run, lot of bears who read the fundamentals get caught, because market is, truly speaking, the market has been unfolding completely illogical for quite some time. We have expiry on every day except Monday. It is also impacting market dynamics. Dekhte hai na? Let's see. Today we just had the third day. Let's see. If you are around for a month, I will be around. If you are around for a month, we will see whether the dynamics have changed or market is moving as we expect to move.
We will not be changing our systems much. We'll only be adding more and more to it. Option inventory, does that really affect, that really change? All that we will see. Hello? It's okay. Remember when he is 768, we tend to become a little impatient when we near the end of our life. So, as a youngster, younger person, we should give him that, just be graceful about it. I don't expect him to be. मिलता है यार, उनको कुछ बोलने से अपने को कुछ मिलता है क्या? मिलता है तो बोलो, दोनों चल के बोलते, तो कुछ नहीं मिलता है. It doesn't make a difference to our life. That is all that I look at. Does anybody saying anything, troller, does it really make a difference to my life? Does it make a difference what people say? I don't want to win an argument with those people who don't want to believe. Winning an argument doesn't make any difference to our life or the quality of our life. That's how you need to look at it. अगर कुछ फर्क पड़ता है अपने लाइफ में तो बोलो, आर्ग्यू करते हैं ना. फर्क नहीं पड़ता है तो छोड़ो, चलो अपन अपना काम देखे. अपने को बहुत करने के लिए बहुत कुछ है. ये सब कौन? That's how I look at it. बना देना. Of this bar we will know whether it is a ghutna or no. हाँ, वहां एंटरटेनमेंट ढूंढो ना स्पेसेस में. Spaces is purely for entertainment, nothing else. Market trading has to be boring. You cannot jump, you cannot feel sad. You have to be patient in that. Wow. Nothing triggered today. Interesting.
नहीं बना, नहीं बना। मयूर त्रिवेदी व्हाट्सएप देख लो। चलो ना। अरे निफ्टी में जाना है। Ibul's Housing Finance. Here is one trade for PTST, Ibul Housing Finance. Trade for BTST. जाना चाहिए। Happened. Oh, grief.
Okay, I bought a Nifty for tomorrow. Seeing this going up. Our pattern is not any weakness. Further progress, Krantimon, I am going to be online 3 to 3:30 every day, Monday to Friday. You are most welcome. Join in anytime you can, any want. Of my whatever I am doing, entirely based on some of which I am revealing, some of which are reserved for those who come to my big trade, which coming back to the point, I will be online every day. Plan to be online at least for the next 3 months. Let us see. Depending on how it goes, how people take it. More and more people join in and continuing. At the moment, there is no change. It's still by August till end of September. Selling some, take some out. Good afternoon, Mr. Oh. Opening 20. See. Also bought and blind. Sir, I am not. Of the effort. Educate as far as possible. Only music is audible. How come? Is there really a problem?
You can't hear me? Please let me know if you can't hear me. भी आया वॉइस, कहाँ जाता है वॉइस? मेरा डॉक तो दिखाता है देयर इज नो लॉस, 0.0% दिखाता है. How is that possible? Strange. Okay, I will have my... Okay. I guess most of the platform issues are solved except for this voice thing. Maybe I need a new mic. The voice is very clear. See? Quite a few are saying voice is clear. There are few... See, if you are on a mobile connection, sometime you may lose. Please understand the problem may not be at my end, because I have a 100 Mbps connection and a top-end system, so shouldn't be a problem. Plus, the dock is always showing what is the loss that is happening. Let me add this, chalo. Morning, a million frames have been added, and on the million frames there's hardly any loss. It's showing 0.0%. It's less than 0.1. There's absolutely not an issue in my end. In fact, after Monday I got a few things changed, added a lease line. Anyways, back to the market. A, B, C, D, E, it could E, S. Well, last up. Okay, thank you so much. Any feedback you give me, I'll be more than happy to add in, change, add more. Feel free with your comments, but you can DM me on Twitter also. And sometimes the voice is breaking. Try the other way around. Is it much clearer now without a background music?
I guess it will be clear, but the only problem without the background music is those people who play it later. It will be like the screen is just going on and it's completely silent. I put in the background music. Editing it and putting background music later is a nightmare because it is 6-hour video. Feel free. Full housing finance 117. Oh, maybe I need a mic which will move along with my head. है ना, कर सकते हैं ना. Let me try that. That should be easier. Fine. I think I have a solution. We can do that. That will make it much easier. Come on, move. Move. Thank you. That's free background music from YouTube. Nothing. Yeah, every day it will be available, Monday to Friday. Live, same. In fact, as every day goes, you will see some improvement in the quality, some improvement in the presentation, some improvement in the, how do I say, knowledge shared, some improvement in, we will go deeper. Let the first week go, let the platform be set properly. Once the platform is set, I will, then my editor will also come in. We should be able to improve a lot more on the okay, I will be doing that. Looks like there is only one BTST today so far, unless anything triggers right now. Nothing is triggering. अरे बीथावर नहीं लगा सकते भैया, YouTube strike मारेगा. बीथावर is a copyrighted software even now, copyrighted music. मेरा बस चले तो किशोर कुमार चलेगा दिन भर. Like how earlier when I used to do in when I used to trade way back in 2012 and 13. We used to have a live trading room in Rajkot. I used to trade there. All day we used to have all songs playing all through. But trading has to be fun, but not fun in excitement. ये खरीदा ये बेचा, ये खरीदा ये बेचा. Even then we used to have the same dull, boring. Are we now? Ego. Ego is back up. It's going up. Is up. Okay, like up. Here and down. Sideways. Open. Coal India is up. Up. After a couple of days, once or after this week, I will start adding the trading of the stocks also. That's when we will have a lot of trades going on simultaneously. Ooh la la. This is what happens. If you understand, on Monday I was saying this is not a pattern that will take the market down. So it went down on an intraday basis, it came up.
Same thing I expect here with Nifty. This is not a pattern that will take the market down. It has to go up. Again, not a mark that will take it down. Yeah, cement. We had this also. Just blasted off from 224. When did we get India Cement? India Cement, I think we got yesterday. India Cement. ट्रिगर हुआ था, कहाँ ट्रिगर हुआ था इंडिया सीमेंट? India Cement. Yeah, India Cement was triggered today, June 21 at 9:24 in the morning. 225.60 in tough. We will start paying attention to the scanner also, and the scanner stocks. We will start taking those trades also. Oh, sure. 18,786. ये क्या कहाँ से ला रहे हो? Looking at 18,894 tomorrow. We hit or even above that. Nothing. All good. All good. Patterns very convincing. What else? 3:23 हो गया. Okay. That said, I guess market will close somewhere here, plus or minus 5-10 points. So almost 3:30. Let's call it a day. We have only one BTST today. Ibul's Housing Finance. 116. It's already up to 117. Could be a much higher close tomorrow. Right. So shall we call it a day? Thank you very much, everyone. I have had fun today, as usual. I hope we will have more fun tomorrow. We will see a unidirectional market tomorrow. Tomorrow's what? Tomorrow's Thursday. Thursday is expiry. Yes. We should see the expiry session of Nifty. That should really be interesting. Let's see what trades we will get by end of the day tomorrow. Thank you, everyone. Have a great evening and hopefully see you tomorrow in the morning. Bye for now. Yes, Nifty BTST. I have taken Nifty BTST.